हेलो 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 1 2 3 माई टेस्टिंग, क्या हाल चाल है गाइस। वेरी वेरी वेलकम स्ट्रीम इन द गेंशन इम्पैक्ट के न्यू स्ट्रीम में, इवनिंग स्ट्रीम में। भर भर वेलकम। सब ठीक ठाक, टन 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 टन। HSR नहीं होगा, सारी 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 वेरी वेरी सारी। बॉट बंद है, बॉट को चालू कर देते हैं। सारी पहना के मारेंगे। HSR खोलो। HSR में मजा नहीं आएगा यार, अपडेट अपडेट करना पड़ेगा। क्या वो सब गेम खेलेंगे? कि हल्ला उल्ला चल रहा है, हल्ला होने दो। HSR का समय अभी नहीं हुआ है। कौन हल्ला कर रहा? कौन हल्ला कर रहा है? हम हल्ला कर रहे हैं भाई, सुबेरे सुबेरे फुल हल्ला। क्या मतलब हल्ला चल रहा है? अभी नहीं, सुबह में हल्ला चलता है पेलम दम पाली दबा के। आबू। पेलम पाली का अपडेट कर दिए हम। 4.1 हो गया मेरा। अभी पूछ देंगे उसका स्टोरी में से तो तेरा फट जाएगा। पूछो पूछो, सब हमको पता है। कहाँ से करूँ अपडेट? तुम मत करो अपडेट अभी। हम देखो किए हैं अपडेट तो मेरा वर्ल्ड गायब हो गया। ठीक है, वो स्टीम से कनेक्टेड नहीं है जो रोल नया किंग अपडेट ओपी किए वन हैं, मोरा एंड नाउ हैज मोरा। तो इसीलिए दिक्कत हो रहा है कि वर्ल्ड तो गायब हो जा रहा है। इसका मतलब कि हमको ही नहीं पता है, रुको एक मिनट गूगल मार के आते हैं। गूगल क्या मारेगा, हम ही बता देते हैं। कहाँ से जानना चाहता है सोल, बताओ। शुरू से कि बीच का, कि अभी तक क्या क्या कर चुके हैं वो बता दें। तो सर्वर वाला के चल रहे हाँ हम वीज भी। तो सर्वर वाला खेल रहे हैं हम वैसे भी। अबे तो सर्वर का भी अपडेट कर देगा ना वो गधा। आज ही अपडेट आ गया है सुबह में। आज ही नहीं, कल ही रात में अपडेट है। तो इधर पैच हो गया जितना है। भी कटसीन स्किप मारा है वो बताओ। कटसीन? कटसीन क्या, मेन स्टोरी तुमको बता देते हैं क्या है। मेन है कि तुम्हारा नॉर्वे में रहता है, तुम नॉर्वे से पूरा मार धाड़ करके वहां से जीत जात के निकलता है इंग्लैंड के लिए। इंग्लैंड में पूरा कब्जा करना के प्लान होता है, और पूरा इंग्लैंड में धीरे धीरे कब्जा करते 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 स्टार्टिंग में ही एक दो भाई रहता है, ठीक है। तो दो भाई अलग अलग चल देता है। एगो इधर कब्जा करने चलता है, एगो उधर कब्जा करने चलता है। तो हमारा डेटा सर्वर से थोड़ा उड़ेगा। तो हमारा डेटा सर्वर से थोड़ी उड़ेगा। डाटा सर्वर से उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा, यही तो कंफ्यूजन है। अभी तक हम सर्वर में ज्वाइन नहीं किए हैं। अगर तुम किसी सर्वर में ज्वाइन है तो अपडेट करके देखना, अगर सेव उड़ जाता है तो दिक्कत हो जाएगा। और नहीं तो एक काम करना पड़ेगा। अपडेट किए हैं आज
तो एकदम फुल स्पीड में खेलना है, आइंड मारना है, जो करना है, ठीक है। It is but an inept. Long have the mountains with lantern right near it. Cloud retain. One must never rest. But a moment ago. Perhaps there are Cloud retain. One बोलो। surmises. However, if you क्योंकि मेरा वर्ल्ड वाला जो हम लोग बनाए थे ना, हम कल एक दो दिन पहले, वो उड़ गया, चेक किए हम, तो उसका नहीं था शायद, सेव में 0 डेज लिखा हुआ था, शायद मतलब वो अगले अपडेट से पहले निपटा देंगे। ये करना पड़ेगा, थोड़ा रिस्की रहेगा, मतलब ऐसा बोल रहे हैं। सर्वर का चेक नहीं ना किए तुम, सर्वर का चेक कर सकता है, अगर किसी सर्वर में ज्वाइन था अपडेट मारो, सेव रहता है तो ठीक है, नहीं रहेगा तो वही करना पड़ेगा। Wonderful. Well, if the two of you are interested in going to... Yes. लेकिन हम लोग जो करेंगे उस सर्वर में, उस सर्वर वाला को हेल्प हो जाएगा, जो भी हम लोग पोकेमोन पकड़ेंगे या फिर हाँ वही सब। इसीलिए सर्वर वाला मैं सोच रहा ज्वाइन करके ही खेलें, तो सर्वर वाला को तनी मनी हेल्प होगा, इससे वर्ल्ड खेलेंगे। वर्ल्ड वर्ल्ड में खेलते हाँ, सीधी बात छोड़ो। वर्ल्ड में खेलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई बीकेएल हाई होगा जिसको फेले पेलम पाली नहीं लेना था 50 रुपीज में, बट अब पूरा पेलम पाली कर रहा है। वर्ल्ड में खेलेगा कोई दिक्कत नहीं है, अपडेट ही नहीं करेंगे, एक ही वर्जन पे टिकेंगे आराम से, तब हो जाएगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं। सर्वर में यही दिक्कत है, लेकिन वर्ल्ड में खेलेगा आराम से मस्ती में, कोई दिक्कत नहीं। सबको एक अपडेट देके एक ही अपडेट में खेलते रहा जा, बोलो। लेकिन उसमें 4 प्लेयर एक टाइम पे खेल सकता है बस। ये क्या हार के रहा वर्ल्ड में खेलते हाँ, मस्ती में क्या सीन हाँ। चलो ठीक है, तो वही करो, 4.1 का अपडेट दे देते हैं तुमको, और हाँ 4.1 में ही खेलो लगातार। एक काम करते हैं ना, ठीक है, तो कौन सा हमारे साथ 4 बंदा भी आते हैं, हमारे साथ बंदा भी आते हैं। हाँ वो भी बात है। वो सीन हो सकता है विदाउट प्रॉब्लम। एक बार पूरा खेल के आधा हो गया तो खेल लेगा, 1-2 दिन एफआईआर हैम कर लेंगे, बाकी अपना। बीच में एक आधा हो गया तो फिर खेल लेंगे, बाकी अपना कर लेंगे। हाँ तो ठीक है, 4.1 का आज तुमको हम भेज देते हैं, स्ट्रीम के बाद इंस्टॉल कर लेना, कल से थोड़ा मोड़ा खेलते हैं। आज रात में हम पहला विंड मार ही देंगे शायद, आज रात में चाहे सुबह में, रात में सो गए तो सो गए, सुबह उठेंगे फिर कर देंगे क्लियर। सारा इंग्लैंड पे कब्जा कर लिए हम लोग, एक या 2 एरिया बचा हुआ है, साला नहीं पता कहाँ कहाँ से वापस आ जाता है एरिया, पूरा कब्जा करते जाते हैं, फिर नया एरिया खुल जाता है, फिर नया एरिया खुल जाता है, इसकी भैंस क्या। ये तो फंस थोड़ी गया। देर बाद तुम्हारा भाई भी मर जाएगा। कोहिनूर डायमंड इंडिया में वापस आना चाहिए। थोड़ी बात तुम्हारा भाई भी मर जाएगा, उसको मारने का प्लान हम ही लोग बना रहे हैं, सठिया गया है वो भाईवा मेरा,
अपने आप को भगवान Roll समझने gamer लगा from है, Seoul lost Mora and now has Mora. इसीलिए उसको टपकाने का प्लान हम लोग कर रहे हैं। अभी समझा रहे हैं, सिर्फ समझेगा नहीं तो उल्टा दिया जाए। Gamer from Seoul माने Black Swan निकल ली पिटी पे। Face green smiling. वो अरा मरना भाई तय पूरा है उसको। विनलैंड सागा की स्टोरी चेप रखा हा। हाँ। Congratulations भाई face blue smiling. लॉल सही में रे। Roll King OP won Mora and now has Mora. हम नहीं देखे हैं विनलैंड सागा लोल। थैंक्स सोल। तो हम भी कहाँ देखे हैं, हम भी नहीं देखे हैं ब्रो। तुम्हें नहीं बोला था फेस पर्पल क्राइम। ओका डीकेएच ले एफआईआर मजा आएगा बोट अच्छा हा। ओके वो ऊपर करना पड़ेगा तब ये होगा। माँ ने मैप अनलॉक कर दिया पेनाकोनी का। क्या मैंने 3 मैप अनलॉक कर दिया पेनाकोनी का। कौन सा मैप? यस राज वेरी वेरी कुछ नहीं भाई। यस यार वेलकम वेलकम वेरी वेरी वेलकम। यार चले स्टोरी कर लिया भाई। अनटू डेथ वेल बॉस तक। यश राज मेरा भी कर दो। सैम को आने दो डेथ को भूल जाओगे। किंग ओपी स्टोरी करो भाई बहुत गार्दा स्टोरी हाँ एकदम से डार्क हो जाता हा। अरे भी वाला खोलना पड़ेगा। बीसी वेकेशन के लिए आए थे इधर साला जहां देखो उधर खतरा हा। फेस ग्रीन स्माइलिंग। यश आर अभी तुमने डार्क देखा कहा है। आर दबा अलमित। आए फेस हाँ ब्लू हो गया। स्माइलिंग। को उल्टा कर दिए थे। चलो ये भी कंप्लीट हो गया। यश आ में स्टोरी नहीं देखता। अभी विनलैंड नहीं पहुंचे ये सोचो किंग। एक एरिया का माने करेंगे वो तब बॉस शायद किया विनलैंड बीसी जा आत्मा पाएंगे। चुरा रहा मेयर कैरेक्टर्स की। किंग ओपी गेम कोडो एफआईआर। किंग ओपी कुछ और के लिए खेलता है। लॉल यश आ शॉट दिया। यश आर अभी वो कुछ और भी चुराएगा। गेमर फ्रॉम सोल सही पकड़े।
चल आज इसके एडी में इवेंट कर ही दे। देखते हाँ। तेरी वो भगवान, चलो साला काट के भाग गया भाई। देखते रहो भाई, फेस ब्लू स्माइलिंग। देखते रहो, कांड तो अभी बाकी लाइक है। वाइक भी कर दो भाई, देखते रहो बट लाइक वाइक भी कर दो। बीसी ब्लैक स्वान की क्या हाई एंट्री थी, माँ ने रात के बजे तक क्वेस्ट किया। हाँ हाँ, जब हम उठे तब ये क्वेस्ट ही करा था बाबू साहब। सेम भाई। बट मैंने उस टाइम एंड किया था। स्पॉइलर चाहिए क्या, फेस ब्लू स्माइलिंग? नहीं। बीसी बीसी वो 192 चला गया। फेस ब्लू स्माइलिंग। अबे सुबह का स्ट्रीम अभी तक बंद नहीं हुआ क्या? बंद तो हो गया। वो मेरे लोल। से ज्यादा कौन किए हुए बे? अरे साला लात खा के बच गया एक। ओ सुबह देवांश भाई क्या हाल चाल, वेरी वेरी वेलकम स्ट्रीम। 1150 से मिला, इसमें कम पॉइंट मिला। तो तू अभी स्ट्रीम कैसे कर रहा है? ये कर रहे हैं, सुबह स्ट्रीम किए, दोपहर को बंद किए, दोपहर को बंद करके खा पी के मस्त 7 ऑफ सीन बीसी देखे। अभी बहुत मजा आ रहा, स्टोरी मी अवेंचर इन आईपीसी अनाइलेशन गैंग द फैमिली और फिर सो आकरोन गए थोड़ा बीसी सब देर, पेनाकोनी में। फिर स्ट्रीम की। दिस इज माय टुडे शेड्यूल। Finally finished with the commissions we were. 7 सीन्स भी अच्छा है भाई। अबे यार उसी में घुस गए हम। एक बात गलत है यश आ भाई, और स्टेलरॉन हंटर भी। चला घटिया मैप है। अनाइलेशन गैंग पेनाकोनी भी नहीं है। नेक्स्ट अपडेट के कंफर्म बैनर्स क्या है रे, बता तो। I'm fine. नेक्स्ट अपडेट का बैनर है, इसी मेरे से ज्यादा कौन किए हुए? अबे दो साले को। अरे यार माँ की माँ आँख। ने सुना हाँ ब्लैक क्यों? स्वान ने इनविटेशन चुरा लिया हाँ अनाइलेशन गैंग का। तो दूर रहो।
पता नहीं सच हाँ या नहीं। अबे बोलेगा क्या बैनर्स है। अरे नेक्स्ट अपडेट में बैनर है, क्या था भूल गया अभी। हैकरों ने चुराया है। What's your problem? माधर, चल निकल, चल निकल तू भी। Where'd that come from? बस अब देना स्पॉइलर। चल सालो, अब मैं रट को खुद स्टोरी करूंगा। हो गया, चलो भी। लगता है तुझे खुद नहीं पता। हाँ, नेक्स्ट पैच में आपका Face बैनर green आ रहा है smiling. चियोरी इटो नुवलेट एंड कजूहा। और दू क्या फेस ब्लू स्माइलिंग। नेक्स्ट पैच में और नेक्स्ट फेज में अभी जो बैनर चलेगा वो है यामिको एंड साव। नहीं फेस ऑरेंज बाइटिंग नेल्स। ठीक है, ये कंफर्म है क्या। हाँ कंफर्म है। रोल किंग नुवलेट ओपी सिर्फ लॉस्ट कंफर्म नहीं है, मोरा एंड नुवलेट नाउ या फिर हैज अल्बिडो मोरा। उसके जगह हो सकता है। ठीक है, कोई मरने वाला है। चियोरी कजूहा ये दोनों फिक्स है। Finally finished with the commissions we were इटो doing भी for शायद Queen. फिक्स ही है। Rolled gamer from Soul won Mora and now has Mora. Face blue smiling, face blue smiling. अलमित तेरे मोड को समझा दी स्पॉइलर दी रहा। मत दो भाई, फेस ऑरेंज बाइटिंग नेल्स। तू कर रहा था ना रात में, तो कैसे तू पीछू आ गया भाई। फेस ब्लू स्माइलिंग। आधा ही किया। अरे लेढ़ा है तुम, मैं चला बिल्ड करने इसी अपना दिन भर कैरेक्टर। एचएसआर भी खेलते रहता है तो भी तुमको हैंड पिंक वेविंग। पिछुआइए ले है भाई। आज कंप्लीट कर दूंगा। स्पॉइलर अब ताना भी हेन। हाँ लाभ, अब बाहर कहीं दे जा रहा है। याशार तेर को कहीं एक से। स्पॉइलर देता हूँ तेरा फिर इस बार बैक आने वाली है। पेज बन रहा है ज्यादा ना ये, कोई इस वाले को बताते हैं। वो पूरा टॉप पॉइंट लिए हुए है। रट को ही खेलता हूँ दिन में चोद इतना सीएनजी कैसे मेहता से क्रैश हो बचे। गया। गुड स्पॉइलर फेस ब्लू स्माइलिंग, फेस ब्लू स्माइलिंग। नहीं मेरा सारा बैक क्लियर हो गया। मैं भी रात को ही खेलता दिन में डोमेन लोड। Where'd that come from? यश आ कैसे उन्होंने तेरा साथ कुछ किया क्या। अरे बीस इतना काहे टकरा जाता है भाई, फिर से ये बाहर कर देगा, हरामी है साला एक। थकना भोतड़ी से। जो लोंडा बिना लाइक मारे जाएगा उसके जीवन में लोंडिया कांड करेगी। Ow! I'm fine. अरे यार जीते नहीं भाई, साला हरामी था चुम। बताओ, लेकिन पॉइंट इसमें ढेरे मिलेगा।
ना माने बार एक हाई सब्जेक्ट का एग्जाम दिया था मैंने उनका पेपर स्ट्रैटेजी क्रैक कर लिया ग्लासेस पर्पल येलो डायमंड ना मैंने 3 बार एक ही सब्जेक्ट का एग्जाम दिया था, मैंने बार उनका ब्यूट्रो हरा दिया पेपर इन्हें। स्ट्रेटेजी क्रैक कर लिया। बीसी वो स्ट्रेटेजी हम ही बताए थे। तो मुचन उसको हम ही स्ट्रेटेजी बताए फाइनली थे। इलेक्ट्रिकल से पीछा छूटा। पढ़ाई का मजा लो भाई, सजा जैसा नहीं पढ़ो, समझा? ये मजा आएगा। और हम लेंगे आज के बाद कभी सर्किट नहीं देखूंगा। माल। देगा नहीं हम, साला ये गुआ माल है, दिल्ली है वो। सर्किट नहीं देखूंगा। बोल भी कौन रहा है जैसे खुद के मार्क्स टॉप पे आते हो। हम आता है भाई मेरा। ये साले चल निकाल। कुछ नहीं बीसी दिमाग का बोझदा हो जाता हा साला उसमें इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स नंबर आता हा। In your dreams. याशा तुम मेरे कैरेक्टर्स यूज करते हो क्या? बार तो बेटा Gamer हम from हारने Solha। वाले नहीं है। जिंगली यूज करता हूँ तेरी। In your dreams. मेरे को मोरा की बहुत कमी है इसलिए उसे करते रहो भाई, जल्दी लॉल। क्लियर हो जाता हा। फेस ब्लू स्माइलिंग। मोरा है लोल। ओके 403 पॉइंट फाड़ दिए भाई, फाड़ दिए। 1500 मैक्स मिलता है, लेकिन 360 मैक्स है। 360 के ऊपर से जाएगा तो पॉइंट नहीं मिलेगा ज्यादा। सोल काफका को सपोर्ट में रकड़े में उसको अपनी ब्लैक स्वान के साथ उसे करूंगा। ओके राजा जी। फेस ब्लू स्माइलिंग। फेस ब्लू स्माइलिंग। रोल किंग ओपी लॉस्ट मोरा एंड नाउ हैज मोरा। सी सारा का सारा तो खुल गया एक के बार में। 4000 का 4000, क्या बात है, इसको बोलते हैं स्पीड। Rolled Yasha one Mora and now has Mora. Rolled Gamer from Soul lost 3 को Mora देना and है। now has Mora. Ice Purple crying. एक Ahoy Captain King OP तीन। is trying to get a crew together for a treasure hunt type heist amount to join. Ajao heist में। सब लूट लेगा किंग ओपी, नहीं रे। Ahoy Yasha has joined the treasure hunt. Ahoy Gamer from Soul has joined the treasure hunt.
जय श्री राम। बीसी, अरे यार टॉप में क्यों चला गया? Think we're finally finished with the commissions we were doing for Jean. A day in the life of Add Astro. Thank you for Add Astro. Wonder how she's feeling now. Let's head to the यश भाई, अगर हम लोग हार गए तो 0 मोरा हो जाएगा। ऑल रिस्की। स्पार्कल मिल जाए बस अब। होजने दू। फेस ग्रीन स्माइलिंग। फेस ऑरेंज बाइटिंग नेल्स। हो गया मेरा डाउन पाल वर्ल्ड और पॉइंट। The curse of Black Heart Island is real. A kraken emerged and scuttled their ship, which sent the entire crew to Davy Jones' locker. A crew of pirates and raiders check their flintlocks and sharpen their cutlasses as they disembark for Black Heart Island. कौन जीता? ले लोटा। सभी तापक गए। सबे टपक गया, केकरो नहीं मिला। ले लोटा भाई। King OP, you have Mora. सब लूट गया, बर्बाद हो गया। अथर्व खंडेलवाल Streamlabs. Top points: King OP, Titanfall, TTF, Prabhash, Devansh, Rahul, Moria, Homecoming Lights, Jati the God. गायब हो गया भाई ये तो। टोल का तो नाम है गायब हो गया भाई। लोल। ये Streamlabs कौन है भाई? जो स्ट्रीमलाइट बॉट है भाई। अलमित के पास कोई दीदी रहती होगी, इसको बचा समझती होगी, और अलमित जो है उस दीदी को दबोचने के चक्कर में। दीदी क्या भाई, हमें भैया बने हुए हैं। लेकिन मेरे पे तो पॉइंट्स था। अबे जो सुबह में आया था वो तो बॉट था भाई। स्ट्रीमलाइट तो बॉट ही है। के पॉइंट्स जाते हैं हारने पे। अबे तो बॉट चैट कैसे कर रहा था? कैसे करता है? हेलो। अबे अलमित एआई से क्या बनाओ, कोई आइडिया देना। अलमित एआई से क्या बनाओ, आइडिया देना। साले अपने से छोटी बाछी को इस नजर से देखता है, मुस्लिम है क्या तू? पागल है क्या? मैंने रजिस्ट्रेशन किया है। और यशराज का हाल चाल? वेरी वेरी वेलकम स्ट्रीम, बहुत बहुत स्वागत है। मैंने रजिस्ट्रेशन किया, नेशनल लेवल पे प्रोजेक्ट दिखाना है। तेरी भूत के जाओ, एआई बनाएगा लड़का हमारा। इंदेवंश वही एक्सरे वाला ऐप निकालो, लड़की का फोटो खींचो, लड़की गायब। इंदेवंश अभी फरहान आ जाएगा भाई। XD
मर को तो लगता है अल्मित मुस्लिम है साला, अनसब्सक्राइब करो इसको। ऐसे करेगा यश भाई? राज हम डेली दिया जलाने जाते हैं, बताओ ऐसे करेगा? Umbrella warfare, I guess. बीसी मेरे को सिखा रहा है कि बॉट चैट कर रहा था। बीसी बॉट के बगल में टिक का साइन आता है, उसके बगल में नहीं था, किसको मोड़ बना दिया भाई। खुदा हाफिज अल्मित भाईजान। कौन है भाई? दिया का बोल के नमाज पढ़ने जाता होगा, क्या पता हम देखने आ रहे हैं क्या। अरे अबे बीसी, कोई आइडिया देना नू। अबे आइडिया देना। क्या आइडिया चाहिए? आइडिया ऐसा देंगे जो तुम करिए नहीं पाएगा। This one's got your name on it. अल्मित का खास बंदा तो अब पूरा गेब रहता। Umbrella warfare, I guess. यश और मालिकुम सलाम यश भाई। एआई से क्या बनाऊं? एआई से क्या फेस बनाओ कैम चालू भाई? करके दिखा दिया, एआई जलाने बनाना जा चाह रहा है। है ये। नेशनल एलवीएल पे दिखाना हा। नेशनल लेवल पे दिखाना है भाई इसको, सोच रहा है नेशनल लेवल पे। मीम बनाने वाला, मीम ऑटो बनाने वाला करो, ठीक है? Teamwork is dreamwork. एक क्लिक में मीम बनाना चाहिए। Hey there. Feeling lucky? Umbrella warfare, I guess. Haha. साइंस प्रोजेक्ट बना रहे हो क्या? यस, हाँ भाई पूरा एकदम। अमित भाई जान आपका छोटा अरे तेरी भूत के जाओ। नहीं से प्रोजेक्ट बनाना है, नहीं एआई से प्रोजेक्ट बनाना है, पार्टिसिपेट किया है रजत। रजत दलाल के टक्कर का छोड़। अरे भाई साहब, लिटरली भाई यस, क्या सोच के रजिस्टर किया था? एआई से कुछ लड़की का बना बना देगा। लड़की से बातचीत करने वाला कुछ बनाओ, ठीक है? Add asterisk. कि बॉट अपने आप ही बातचीत करे और सेटिंग करा दे। क्या देवांश? ऑटो बोर हो रहा हूँ, चलो पार्टिसिपेट कर लेता हूँ। अच्छा ये सोच के किया था पार्टिसिपेट। तो भाई बोर हो रहा था, मैं बोर होते रहता। सारा कम्पिटिटिव एग्जाम में भर दे फॉर्म, है यूपीएससी का भर दे, यूपीएससी बीपीएससी। सीधा बोलेंगे कलेक्टर बन रहे हैं भाई, कैसे तैयारी करें? चैटबॉट नहीं, वो बहुत इजी है, कोई भी बना सकता है। अरे बना तो कोई सकता है, पटा के कौन दिलवा सकता है बॉट से, वो ना है मेन। मैं बताऊं लड़की के कपड़े फेस ब्लू बना दे स्माइलिंग, अच्छे फेस वाले, ब्लू जो स्माइलिंग, फेस वो ब्लू अंदर स्माइलिंग। पहनती है भाईजान। ये ज्यादा तो डार्क नहीं हो गया ना? अरे एआई से बनाना है भाई, कपड़ा कैसे बनाएगा? एक काम कर, फिर 3D मॉडल बना के दिखा।
अब बोलेगा वो भी नहीं बनेगा, बहुत हार्ड है। बीसी अगर जीत गया तो तेरे को सुपर चैट करूंगा 1 लाख। बीसी अगर जीत गए तो टेको एक सुपर चाट करूंगा की। अब पहले कोई उतना में तो अच्छा तेरा आइडिया दे। सर्वर खरीद लेंगे। एआई से लड़की हाँ के बोलना रे। अंदर के समन का फोटो बना दे, जैसे है वह शोकेस होगा, सब जेन बाथरूम भाग अब कोई जाएंगे। अच्छा आइडिया दे। 1,000 का सुपर चैट करेगा। सी। हेलो। ये बता 1 लाख में कितने जीरो होता। हाँ हेलो, क्यों लो रे? मेरा चाट वाईटी हाई गायब कर दिया, इतना अरे खतरनाक अरे। आइडिया था। 1000 लिखा हाँ नो। हाँ क्रंची रोल के कौची करेगा? देखेगा? अबे उसने 1000 कहाँ लिखे। देखबे रे? Every वेबसाइट पे तो मिल ही रहा है सब जगह, हम भी तो देख ही रहे हैं। एनिमैक्स। एनिमैक्स तो है स्क्रीन कि नहीं? हटा। 9 एनीमे। अलमित के लिए 1 लाख में 3 जीरो होते हैं, फेस ब्लू स्माइलिंग। हिंदी वाला फेस देखता ग्रीन है? स्माइलिंग। ये हिंदी वाला तो टेलीग्राम पे मिल ही जाएगा, टेलीग्राम पे हो गया चाहे। कौन था? एसेसिन्स क्रीड खमखड़िया। कंसिडर का देखना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा। अरे तो मांग, हम मेरे पास नहीं ना है, दोस्त के पास है। एनीमे फ्लिक्स पे जाके देख सकता है डाउनलोड करके। फ्लिक्स। देख, वहाँ भी इंग्लिश में मिलेगा, कोई कोई हिंदी में मिलेगा। अरे बहुत कम मिलेगा हिंदी में, जो मिलेगा देख लेना। क्रंची पे सब हिंदी में मिला है। कौन बता दल को? को एगो लिंक दे रहे हैं, उस पे देख लेना जो तुमको कौन सा एनीमे देखना है। कौन कौन बीसी एक दो को देख रहा होगा ना जो अच्छा लगा होगा। असैसिन क्रीड खत्म कर दिया, थोड़ा सा बचा हुआ, आज सुबह में एंड हो जाएगा वो। हैं? कौन सा सोलो लेवलिंग देखेगा? हाँ। पबजी नाम है हीरो का। अलमित क्रंची रोल का आईडी दो, मेरे को भी हिंदी में देखना है। हाँ। ट्रेलर देखा है काले? अरे तो तीने को अबे किया है, तो तीने को ना देखोगे? वो रिलीज हो रहा है, हफ्ते हफ्ते रिलीज होता है वो। तुम लोगों को एआई एप्लीकेशन के बारे में कोई आइडिया नहीं हाँ क्या? अरे यार पूरा सीजन नहीं है। कौन सा एनीमे देख रहा है? नया नया एनीमे हर दो। हफ्ते रिलीज होता है। one client. उसको two बोलो clients, ओवरफ्लो three देखने। clients. हैं? अरे चुतिया, ठीक है हम पता लगा के बताते हैं। Silly churl, Billy churl, silly Billy. नारुतो तो फेंका लिया टेलीग्राम पे। नारुतो तो फेंका ले टेलीग्राम पे। नामो पता नहीं है मैं जो नहीं कौन है सा एनीमे यश आ देखता है। बही। भाई फाइन हो गया।
पहले से कहा था। Toodaloo. ड्रैगन बॉल बोल देखने। हाँ? कौन सा भी एनीमे देख रहा है, बताओ सीधा। Can we play banker? बीसी अभी स्मार्ट सिटी बनेगी, उसमें सब जगह एआई होगा। देख लो जो अच्छा लगता है, बताओ नाम उम, टेलीग्राम पे देखना सर्च करके, जब तक हम जुगाड़ जब करते हैं एआई इधर। आएगा तब समझेंगे। ठीक है। फेस ब्लू स्माइलिंग। सब्सक्रिप्शन लेगा उसका, पैसा लगा रे पूर्वक। गिफ्ट सिटी के बेमी नहीं जानते क्या? क्या? कौन अमीर आदमी है रे? डॉग। 15 दिन का ट्रायल देता है। गिफ्ट सिटी। कौन सा एनीमे देखना है, नाम बताओ, नाम बताओ पहले। रोल किंग ओपी लॉस्ट मोरा एंड नाउ हैज मोरा। द डेली लाइफ ऑफ Left द elbow, इमॉर्टल right किंग, ये arm. तो हम खुद देख रहे हैं। हम ही पूरा देख लिए। अभी इसका नया चल रहा है, वो लास्ट में को और नया आ रहा है, तो वो देख लिए लास्ट तक हम। देख पैरासाइट लिए देखा। ये, हम ही वाला देख लिया। अरे बुड़बक, हम 4 सीजन देख लिए। Rolled gamer from कहानी Soul won बताए। Mora and now has Mora. Good choice King OP. हम इंग्लिश में देखे हैं सब, हिंदी में नहीं देखते हैं। अब हिंदी में होगा लेकिन हम देखे नहीं है हिंदी में। टेलीग्राम पे सब मिल जाएगा, और एनीमे फ्लिक्स पे देखना पड़ेगा। टेलीग्राम पे सबका मिल जाएगा। BC Amazon का अभी एक एक्सपेरिमेंट चल रहा एआई मॉल पे, उधर कोई ह्यूमन नहीं होगा, तुम आओगे समझ लोगे चले जाओगे, पैसे सही में अपने हिंदी आप में कट है। जाएगा। थैंक यू सोल। अभी कैलिफोर्निया में प्रोटोटाइप चल रहा उसका। सही में हिंदी में है। अरे तो अच्छा रैंकिंग ना है ऑफ द रे। किंग्स देखने बोलो, भोजपुरी में मिलेगा। अच्छा ना है रे, इंग्लिश मजबूत होगा। Rolled Yasha lost Mora and now has Mora. ठीक है, हम जुगाड़ करके देते हैं। अभी खोज के नहीं देंगे तो हम उसका करते हैं जुगाड़, क्रंची रोल का। ठीक है, टाइम लगेगा। अरे बीसी पूछेंगे किसी से, जिसके पास होगा उसका बता देंगे, तुमको मिलेगा तो। चलो डाल दो पैसा। कितना रुपया में हो रहा है? अलमितवा ने भी इग्नोर तुम करता देख है लेना, अपनी हम इंग्लिश औकात में देख दिखा दी, लेंगे। फेस ब्लू स्माइलिंग। हम इंग्लिश में अभी देखते क्रंची हैं। रोल हाई क्यों देखना हा, लेकिन हाँ हाँ, वाला में एक आंधी दे, एक बार में 4 गोल, एक बार में हुए क्योंकि वो क्रंची है करेगा लोग। ना यार। अरे तो तुमको Face real देखना है ना, तो smiling. तुम देखना।
फ्री वाला इतना तुम वेबसाइट नहीं है। देखेगा? हम नहीं देखेंगे, हम इंग्लिश वाला देखते हैं। वो तो 99 वाला बढ़िया रहेगा, तू बढ़िया रहेगा। बैंक के पीछे पैसा से मैंने 10 कमाना होगा तो बैंक से दे दो, फैन ऐसे कर लो। हद कर रहा है तुम भी, कोई नहीं देखता इधर एनीमे। अब तुमको जितना वाला करवाना है करवाओ, पैसा हमको भेज दो, ठीक है? हम भेज देंगे, हम आईडी भेज देंगे लॉगिन करके खरीद के, ठीक है? ये कौन हाँ हिंदी में एनीम देख रहा हा, इसको जेल भेजो। तो हमारा डॉग। अभी हम है, देखते हैं हिंदी क्या बात कर रहा है। ठीक है, भेजो पैसा। ठीक हो, भेज भेज भेज। चलो भाई, हो गया काम। देसी हो गलो भाई, माल पानी आ गया भाई। हिंदी डब अब अच्छा हो गया है। अबे ये कौन बीकेएल है जो रात से सुबह तक स्ट्रीम कर रहा है? अरे ये तो मेरा दोस्त अलमित है, फीलिंग प्राउड इंडियन ARMY। अरे भूतनी के हिस्ट्री विस्ट्री नहीं ना पता चलेगा, स्क्रीन शेयर है। अभी के वॉइस एक्टर बहुत हाई क्रिंज वॉइस निकलते हाँ एनीम हिंदी डब की। हमको क्या मतलब है भाई? अबे ये कौन है बीकेएल है जो हिंदी में हाँ बोल एनीम ना, देख रहा है? अरे ये अलमित का भेज एक दिया। और बीकेएल दोस्त है। माने हाँ वो हाँ, देखा था गोजो कून वाला एनीम की। किसी किसी का अच्छा है भाई। अलमित साला फ्रॉड कर रहा। सुनो ना, हम तुमको भेज देंगे करके, 5 मिनट रुको, ठीक है? फिर अपना देखते रहना, ठीक हो? टेढ़ा है भाई। रुपीज वाला प्लान रुपीज में बेच रहा है BC। 80 रुपया वाला प्लान 99 में बेच रहा है। अरे लेढ़ा। अपने दोस्तों को ही लूट रहा है बीकेएल कहीं का। बड़ा हरामी दोस्त है भाई, ऐसे नहीं सुनता है। इस टाइम में तो मौका मिलता है, इसे तो साला हम ही से पैसा मांगता। हरामी दोस्त का नाम बता, अभी इसको ठीक करूं। टिडिंग 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 टिडिंग। अरे कोड वोड मेरा मांगता है क्या अमेज़न रे? वाला चैट पैड अब। अरे कोड भी मांगता है क्या कोई इसमें, बात क्रंची रोल नहीं, लॉगिन अमीर करने के लोगों लिए? को लूटना अच्छी बात होती है। हाँ चलो भाई, वापस आ गए हम लोग। क्या कर रहे थे? मेरा अमेजन वाला चैट पढ़ अब। हो गया काम। एक सेकंड रुको, हम फ़ोन में भी इंस्टॉल करके देखते हैं, चेक करते हैं कोड मांगता है कि नहीं। भाई कोड मेरे पास नहीं है, हम तो किसी और का क्रंची रोल किसी और को दे दिए, बीच या में शाह खाली हम पैसा ले लोग लिए। बुढ़ा हो जाएंगे तब आएगा इंडिया में। दिस इज बिजनेस। कहाँ थे हम लोग? चैट पढ़ना था, सॉरी। अभी के वॉइस एक्टर बहुत ही क्रिंज हैं। डीसी अमेजन का अभी एक एक्सपेरिमेंट चल रहा हमको है भी दी एआई क्रंची मॉल रोल। पे। उधर कोई ह्यूमन नहीं होगा, तुम आओगे, सामान लोगे, चले जाओगे, पैसा अपने आप कट जाएगा। दैट इज कॉल्ड अमीर, समझा?
हमको भी दे। अरे फुल हो गया भाई, 4 गो रहता ही है, 4 गो फुल ही है। अभी तो प्रोटोटाइप कैलिफोर्निया में चल रहा, अगर सक्सेसफुल होगा तो सब बड़ी बड़ी सिटी पे आएगा। पता चला कोई आईफोन चुराने जाएगा और घर आके देखे जी कि बेचारा को 2 लाख रुपया काट गया। वापस जाकर रिटर्न करेगा। मजा आएगा लोगों की जॉब जाते देखने में। फेस ग्रीन स्माइलिंग। ओके चलो। होता है लॉगिन बिना कोड के, ठीक है, क्या टेंशन। उसको एक बार मैसेज चढ़ा को, बाकी नहीं। साला ऐसे पैसा नहीं निकालता। मेरा स्पाइरल कर। कौन है स्पाइरल? अरे यस भाई, क्या चल, वेरी वेरी वेलकम। लॉल। अरे देखो, लॉगिन करके देखो, आईडी पास भेजे। मैं चला HSR फेस ब्लू स्माइलिंग हैंड पिंक वेविंग। आर अभी था टू मेन। मेरा भी इवेंट कर देना। वेलकम वेलकम, वेरी वेरी वेलकम इंडियन कुकू, क्या हाल चाल है? मेरा भी इवेंट कर देना भाई। क्वेस्ट है लंबा चौड़ा, क्वेस्ट कर लेना कम से कम। नंबर नहीं, ईमेल है। अरे व्हाट्सएप पे दिए हैं भाई, आईडी या पासवर्ड, ईमेल आईडी या पासवर्ड। अलमित HSR खेल भाई उधर बहुत इनमें गार्दा दूसरा ईमेल कंटेंट आईडी में था। खरीदे हैं, ठीक है, शांति से देखते रहना सिर्फ। यस। फेस ग्रीन स्माइलिंग। अरे दूसरा इवेंट ईमेल नहीं है भाई, स्पाइरल नया मेरा। ईमेल बना के किए हैं लड़ा। पर्सन टर्क्वाइज वेविंग। सब में हम नहीं करते हैं कर सेट उट, सब जगह ईमेल डाल दें वही सब। अरे गधा, तुम नमा देखो नहीं यार, अलमित न्यू स्पाइरल वेन। गजब लांबा आदमी है है नी यार। मैडम लांबा। क्या? हाँ, ईमेल आईडी पासवर्ड दिया है ना उसमें, डालो उसमें, क्रंची रोल में लॉगिन करो। मेरा भी लांबा हा। मेरा भी बड़ा हा। दिल। फेस ग्रीन स्माइलिंग। खाली सर का मैथ हाई पूछना। कली सर का मत पूछना, कली सर का रोल भाई। किंग OP लॉस्ट मोरा एंड नाउ हैज मोरा। ओम फो हो जाएगा फिर।
खलीसर का इतना लंबा है कि पुल बना देंगे। Riveting. Riveting. क्या ही तत्ती इवेंट हा ट्रूली जेंशन मोमेंट दो। ऑल अबे यार, बड़ा था भाई ये। कौन मारा था? कोई है मारा था। कोई भी स्पाइरल ने क्लियर किया नो। हुआ रे, बोलो रे, रे छपरी। गधा है एक नंबर का भाई। ऊंची डाल दिया रे, फिर से डाल के देखो। हम लोग इनके मेरे में हो गया। सही से डाल के देखे ना, आर बड़ा होना चाहिए। पीसी उसमें लॉगिन ही नहीं हो रहा है यार। पैसा वापस कर पड़ पुकार। मेरे को डायरेक्टर बना दोगी क्या? गेम बदल दूंगा। आए, गेम बना मी दोगी को क्या? डायरेक्टर बना दो, जीआई का गेम बादल दूंगा। गगन ग्लासेस साहब क्या पर्पल चाल येलो है? हेलो डायमंड। हेलो मेरी जान। अल्मित पॉपी प्ले टाइम कहाँ से डाउनलोड करूं? लेकिन बड़ा तो मेरा भी हा। ठीक है, करो लॉगिन। हेलो मारी जान नन्ना। आपका बिगेस्ट फैन हियर। लेड़ा मेरे में सारा दिखा रहा है। लॉगिन नहीं होगा फुल हा अकाउंट। रुको रुको, पैसा भेज वापस। मी वॉचिंग योर स्ट्रीम विद अदर्स। जॉर्ज डीड। करो करो अभी करो।
prevails throughout the land, and all things are made new, as buds in the spring. This is an auspicious era for humanity. और क्या हाल चाल है गगन भाई? फिर वेलकम स्ट्रीम। मार को लगता आप कुछ सूस कर रहा हो बैकग्राउंड में। यस, दैट इज ट्रू। What you doing, my homeboy? मैंने जो If you are presently unoccupied, perhaps we could stop a while at one's abode for some repose. डैब and डैब कर रहा अलमित। अरे हेलो, हाँ हो गया। गधा है भाई तुम। हो गया। लेड़ा कैसे लॉगिन करता है रे छपरी? गधा है तुम, हटाए तब ना हुआ। तप ताप। शांति से देखो और नाम देखो, समझा? केकर नाम है? घापा घाप। अबे चुतिया, तुम नाम देखो ना भाई आपको उसमें। एक और इनविटेशन दाना था। अरे बकलोल, उसमें नाम देखो ना क्रंची रोल में। Peace prevails throughout the land, and all संडे things को बच्चा तो वेलकिन लेड़ा फर्स्ट है गिव भाई। अवे buds है। in the spring. This is an auspicious era for humanity. आओ गगन भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा वो कॉल पे हैं तो आपको छपरीगिरी फैमिली हो के रहा साथ आना है। है। आपको एक और इन्विटेशन देना था, संडे को 2 बिल्किन फिर से गिवे है। पूरा पैसा छाप रहे हैं गगन भाई, गर्दा बढ़ेले है। सही है सही है, आपको फैमिली के साथ आना है। शादी ब्याह हो रहा है का? फैमिली के साथ तो भाई हम शादी ब्याह में जाते हैं, खाने पीने दबाने। अरिस्ला बवाल। ठीक है। फ्री एंट्री माँ अन्ना। हो गया क्या गिवे? मिस हो गया क्या हमसे? If you are अरे presently भाई unoccupied, आज 8 तारीख है, मिस perhaps हो we गया could लग रहा है। stop a आज ही while था, at one's कल था। abode for some repose and conversation. क्या नाम है रे? क्या नाम है? केकरो हो? अरे गधा, मिल के लिए हैं, मिल के लिए हैं खुद हम। तू देख शांति से भाई, जेकरा जो देखेला वो देखते रह। मरे को 4 करना ठीक था, हो? वेलकिन गिव अवे 2 का हो गया, संडे को 2 का। अब मेरे को 4 करना था, वेलकिन गिवे अब आपको 2 हो गया, 2 invitation दा संडे रहा को हूँ। है। अब कौन कौन जीता लेगा? चलो ठीक है, बाय बाय। देखो मस्ती मारो हिंदी वाला। चलो बीसी हो गया, आ गया, काम हो गया। आपको इनविटेशन दे रहा हूँ। हमको नहीं जितवाएगा गगन भाई, ये सब चीटिंग है, सब अच्छा बात नहीं है। बताओ भाई, बुला रहे हैं, हरवा देंगे, ये सब अच्छा बात है? क्या कर रहे थे रे हम लोग? हम फिर से भूल गए। इसके बारे में चर चीज बोल दिया है सब। हाँ तो वापस गेम पे आते हैं। हम लोग क्या कर रहे थे आपकी गाइस? स्ट्रीम पर इनविटेशन दा रहा हूँ। कब है? संडे को दोपहर में कि शाम में? शाम को आना है। PLZZ संडे को बजा। हमको
आपको लेट चैट दिखता है। आज ना प्लीज संडे को 7 बजे, ठीक है? जरूर। भूल जाते हैं भाई, हमको एक बार याद दिला देना मैसेज या फिर The secrets of the शायद mechanical हमको arts of नोटिफिकेशन तो found आता ही है confined ना in a उधर few का। simple words. Oh, but आ why जाएंगे, all कल these हमको याद दिला देना रे लौंडा लो before I begin to divulge them? कि गिवअवे है, तनी लूट मार करके माँ आना है चलता हम लोग अब। को। ओके ओके, थैंक यू फॉर द कमिंग चैट सिया गगन भाई। मारी जानन। चलो डीलुक बिल्ड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गगन भाई बताने के लिए और आने के लिए। ओके। बी गगन सर। गर्दा उड़ाइए एकदम गिवे कर कर के। क्या है, अमनी तो गिव अवे कर नहीं रहे हैं, पैसा दबा रहे हैं अभी। पोस्ट का भी पैसा लूट रहे हैं अभी। गार्दा गार्दा। अबे ये क्या है, कोऑप में हम। कितना बज गया? या 8 बज गया, बताओ कुछ किए भी नहीं। ये ठीक रहेगा। One with wind and cloud. Skyward! Scatter! Whirling snow! ये तो ऐसा ही है, मर गई यार। अलमित में पॉपी प्ले टाइम एंड कर रहा आज। कर ले भाई, हम भी करते हैं कुछ दिन में, चिंता मत कर। सुसु करके आते हैं जब तक ये रिस्पॉन हो जाएगा। A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. A blade is like a tea leaf. Only those who sample it many times can appreciate its true qualities. I only wish life could be as leisurely as this a little more often. How greedy of me. यो बैक। चलो किसी किसी का आईडी चेक करना, तुम्हारा आईडी वाईडी चेक करना है। कॉम्स भी बाकी है अभी तक हम लोगों का। पुल्स भी सेव्ड है। एंडमेंट तो किसी नहीं है, वेस्ट ही करना पड़ेगा लग रहा है। वेस्ट ही खींचेंगे वो। 1 मिनट है अभी। इधर 8 से 12। क्या टाइमिंग है भाई।
12 पार हो गया है तब वेस्ट में। टू डेज लेटर, इसकी भूत की जय हो। एक डेज लेटर तो हो ही गया था ना, 2 डेज लेटर। Eyes purple crying. Paimon has never had dim so much. 25 सेकंड। People at many times can appreciate its true quality. घुस जाए कि मार दे। And that's Paimon's stomach right on cue telling her a blade embraces its duty. मत तो बनाओ फिर। मत बनाओ फिर क्या? बनाने से याद आया, रुक .1 वाला को एक्सट्रैक्ट कर देते। पालवा लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बना ले क्या? लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम पे बना ले। अच्छा, ये लाइब्रेरी मैनेजमेंट वाला प्रोजेक्ट बना रहा है ना। अरे यार, मेरा ही प्रोजेक्ट आने वाला है, वो हेल्प कर देना रे। यस, तेरा ही डिपार्टमेंट का है, कंप्यूटर रिलेटेड, प्रोग्रामिंग से रहेगा शायद कुछ। वैसे मेरा वही प्रैक्टिकल रहता है दूसरा टाइप का, क्या पता, देखो क्या मिलता है। Wind Strider. Yeah, skyward. My apologies. तो यह प्रोजेक्ट का साइंस डे के लिए ना पार्टिसिपेट किया हा तो बनाना ही हा। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम पे बना ले। बीसी लाइब्रेरी कौन उसे करता सब चेज तो इंटरनेट पे मिल जाती। तुम्हें बनाना हा बनाओ। तो यही प्रोजेक्ट है इधर साइंस खुद डे का के कुक लिए। देखा नहीं जा रहना। सर खुद का मेरा तो यही प्रोजेक्ट हा साइंस कुछ डे के लिए। देखा नहीं जा रहा। किंग ओपी टाइटल मेरा भी रिजेक्ट कर देख देते लेना हा। भाई। कौन सा कॉलेज है रे किंग ओपी? तुम बताया नहीं रे। यस, क्या करें? एमबीए करें कोई भी इजी उठा के नी या फेंक सलता। एमसीए करें? एमबीए, एमसीए कौन? या फिर एमकॉम या फिर क्या था, बीएड। तीन चार कोर्स में से कोई एक कोर्स करना है, सीजीसी हाँ सीएलजी का नाम। या फिर शांति से बैठना है भाई। वो इनोवेशन मैराथन वेल। सीजीसी है कॉलेज का नाम। सीजीसी कौन सा नाम है? चंडीगढ़ गांडू कॉलेज। चल मजाक कर रहे हैं, ठीक है। ओ भाई, बहुत थुतिया है। मेरे फ्रेंड्स का बहुत टाइटल खुटिए रिजेक्ट हाँ कर मेरे दिया। फ्रेंड्स का टाइटल रिजेक्ट कर दिया। कुछ ऐसा होना चाहिए कि देश को लगे कि हाँ ये चंडीगढ़ कुछ ग्रुप ऑफ हेवी है। कॉलेजेस। चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, क्या बात है भाई, ये हुआ नाम है।
हमारा कॉलेज का नाम सुनेगा तो Also भाई known as Chandigarh Gandu College. यार, मतलब हम सही समझे। देखा, माई IQ इज वेरी हाई, समझा। तुरंत हम फ्यूचर देख लेते हैं कि क्या बोलने वाला है लोग। एकदम बाबा अलमित। अरे यार, ये 2 मिनट लगाएगा एक्सट्रैक्ट होने में, पीछे गेंशिन का भी मार लेगा ये। चुप भी। राजा चाहिए। अपना कॉलेज अपना का नाम बता। CLG का नाम बता। हम क्या बताएं, हमको अपना कॉलेज का बेइज्जती नहीं कराना है। हम क्या बताएं भाई। अभी सब चुपके चुपके कम कर रहा हा, कोई बता भी नहीं रह क्या कर रहा। सब चुपके बता देगा तो तुम चोरी ना कर लेगा। बेइज्जती हो गया तो क्या हुआ। हाँ, नहीं लगेगा ना भाई फिर। मेरा कॉलेज का नाम सही में जानेगा तो पगला फेस जाएगा। ऑरेंज बाइटिंग नेल्स। CLG का हुआ, तुम्हारा थोड़ा हुआ। चलो तो मैं आ ठीक है, गया हूँ, स्वागत बता नहीं करोगे देते हैं। हमारा। कॉलेज का दोस्त नाम है। दोस्त ना रहा। You successfully redeemed स्वागत for मोरा। स्वागत तो करो हमारा। बार बार वेलकम टू स्ट्रीम। सुबह भाई, क्या हाल चाल है? बहुत बहुत स्वागत दी सुबह से भाई, वाह। देखो, तो बात ये है कि हमारा कॉलेज का नाम है COC। फुल फॉर्म नहीं बताएंगे, अपना खोदते रहो भाई। बता भी नाम। Oh, you're here early. I just ordered. क्या हुआ? कॉक। Here, hand me your cups. सुबह कोई अच्छा AI का प्रोजेक्ट बताओ, नेशनल LVL कंपटीशन पे पार्टिसिपेट किया हा। Wait, BC। you weren't supposed to. CC नहीं, That was for you to COC। read. ये कौन सा CLG ही? सुबह कोई अच्छा AI का प्रोजेक्ट बताओ, नेशनल लेवल कंपटीशन पे पार्टिसिपेट किया हूँ। बताओ भाई इसको। चुटियापा ऑफ कॉलेज। रियल नेम है उसका कॉलेज ऑफ कॉमर्स, Listen, Heimat's figured it out. Let's think about this for a second, Gummy. जिसमें हम नहीं पढ़ते हैं, Huh? ठीक है। More often than not. Oh, you. हम Okay, पढ़ते हैं। My dad is just an ordinary tea merchant. रियल वाला Sales पता stuff, है। you know? It wouldn't even make sense to mention his चाहते business in थे the कि same इस कॉलेज breath में as the जाएं, name of the बट Commerce Guild. जा नहीं My पाए। dad, he always wanted me to inherit the family, but that's just not who I am. Have you ever talked, about your interests and aspirations and बहुत stuff? दूर था मेरे घर से, आते जाते ही रह जाते हैं, Of course कॉलेज I कभी have. जा ही नहीं पाते हैं। I told him I wanted to be a wushu dancer. That I wanted फिर हमने all वहाँ of रिजेक्ट that to कर see what दिया। I could do. According to my dad, though, that wasn't a real job. Just a child's pipe dream. Oh, that's terrible. I'm sure he thought I would come around eventually, but wushu dancing has always been the only thing I wanted to do. बोले One day, क्यों कर रहा है कम? he tried to get me to visit some other tea merchants to start building the right relationships, but I refused to go. We got into a huge fight. We were this close to throwing hands. In the end, I was so angry that AI का। I ran away from home. हाँ। I haven't been back since. एचएन तो इसमें Don't हंसना get on क्या my हा? case just yet, okay? मेरा AI के लिए तो बहुत कुछ चाहिए। No, I बकलोली know that क्यों it कर wasn't the रहा right way to गमदू? go about things. बता दे सही में।
रास्पबेरी my पाई dad's चाहिए stubborn. होगा क्या? No matter how hard I tried to convince पैसा him, हाँ तो नहीं, बहुत सारा BTW एआई है, यूज मेरे करके पास तो। ग्रामर चेकिंग वाला क्रोम एक्सटेंशन बना ही लो। तो बहुत सारा क्या एआई बात यूज है, करके Talking ग्रामर would only get me चेकिंग so वाला far, क्रोम but एक्सटेंशन बन लो। if I made it big and leaned क्या on it बात hard, है। गेम बन लो the कोई। results could speak for themselves. मीको लैंग्वेज मॉड्यूल नहीं आता। But I'm sure you both already know how that's going. Wushu dancing's just not that big in Liyue Harbor. In the past, I would go door to door from store to store, asking if they would be interested in hiring a performer. Most times, I wound up eating nothing but humble pie. And you can't just rely on dreams to put food on the table, right? So, I found a job as a guard to make some money. And now I have enough अगर to get कोई by and then लैंग्वेज some. नहीं आता तो Still. बनाएगा कैसे? Change takes time. चालाकी से। Gotta take it slow, you know? नहीं तो एआई से फेस रीड करके नाम बताने वाला Okay. प्रोग्राम बना लो। Enough of all that serious talk. Our tea's getting cold. Ooh, let's do something fun this afternoon. What do you say, huh? I'll organize. Actually, we kinda already have plans this afternoon. We told XIANYUN that we would go to her kite making workshop. Oh? Are you interested in kite making, Gaming? Oh, no. It's just that I happen to know Auntie XIANYUN. हमको लैंग्वेज मॉड्यूल नहीं सिखाया, बीसी स्किप कर दिया। और ये नेशनल लेवल पे जाएगा भाई, ठगने के लिए। Oh, I know that she's देखिए हम ऐसा ऐसा कांड किए हैं, अब ये अल्मित के कांड कर चैनल दिए। का एक चैटबॉट बना लो एआई वाला। हाँ CNN सिखाया हा। A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. Welcome. So this is a day in the life of the traveler. I'm learning more about you all the time. डेटा साइंस एंड सर्वर कनेक्टिविटी लगेगा, फ्रंट एंड एंड बैक एंड भी लगेगा। एक जीआरपी ऑलरेडी फेस डिटेक्शन वेल कम चालू कर दिया। A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. तो रहे दे भाई। ऐप बनाओगे तो फोन के लिए एंड्रॉयड स्टूडियो एंड पीसी के लिए कोई आईडी। चैटबॉट वाला टाइटल रिजेक्ट किया दे रहे। Welcome. आ ये सब एआई के चक्कर में जा क्यों रहे हो? Blade embraces. वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा। Welcome. पार्टिसिपेट किया हाँ, अब प्रोजेक्ट बनना हाँ। कुछ टॉपिक्स नहीं दिया प्रोजेक्ट का। यो बंटाई 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 से भेरी 4.1 बिजी हो गया कांड। खुद से डिसाइड करने को बोला। कहाँ गेले रे किंगोपिया, हमर चेला, हमर ठेला।
किधर ही रे? भाई हो गलो काम सनातन। रुको कर सरोवरों में जा घुसे देखवा। Senua Kiosk, place to go for classic Yua dishes. A blade embrace. YouTube पे ही खोजना पड़ेगा। वैसे YouTube पे खोजेगा? अरे रियल लाइफ में देखो क्या कुछ प्रॉब्लम है जिसका तुम हेल्प निकाल सकता है इजी वे में, सीधा हो गया क्लियर। और क्या सोचिए, उतना दिमाग लगा रहा भाई, सब इजी है। ये क्या है अभी? और बंद है क्या अभी? और बंद करके रखता है क्या ये लोग? तुम मेरे को टीम बता दे स्पाइरल के लिए, यूआईडी दो। छोटा प्रोजेक्ट ढूंढो एंड खुद से बनाओ। वेरी नाइस। चलो मेन तो दिक्कत खत्म हो गया। वर्ल्ड वाला अपडेट आते चलता रहेगा। I have a guest at one. Apologies in advance. Wait, Shenhe? Not there! यूआईडी ऐड करूं कैरेक्टर से? अच्छा रुक करता है। अरे लोटा, अरे यूआईडी चैट में लिखो, देख लेंगे तुम्हारा जो शोकेस में होगा, जो हाई क्लास है। वैसे तो नाहिदा हाइपर ब्लूम एंड रेड नेशनल लेके जाओ, या फिर वैप है तो वो लेके जाओ। कैन्यू मिल्ट भी चलेगा। है डीपीएस तुम्हारे ऊपर, उसके डिपेंड करता है टीम। पीसीवाईटी पे अंडुइनो रास्पबेरी सब दिखा। अबे मेरा यूआईडी नहीं, अपना। It was so thoughtful of her to arrange this workshop, so I simply couldn't let such consideration go to waste. My motivation. Well, we're all. Who is it that speaks? Oh, come on! You clearly heard Pine. Master stopped to buy grilled tigerfish to share with everyone. नहीं हाइपर ब्लूम में एक दिक्कत है, कुकी नहीं है। You were the smartest, coolest, and prettiest and dead. बाहर लाइक तो कितना स्टार लेने का सोच रहा है ये बताओ। So delicious. Paimon's life is complete. It appears that we've ended up with quite a few participants indeed. Go ahead and divide yourselves into small groups. The materials are over here. The regular dyes and luminescent ones have been clearly marked. As for how to make the kite, one assumes you all make. Paimon may have focused a little too hard on the eating and less on the. Alt F. She could count on you, traveler. YouTube पे ही खोजना पड़ेगा कोई प्रोजेक्ट। कॉपी मत करना, कॉपी करोगे तो अगर स्पेस स्टेशन भी बना लोगे तो कोई वैल्यू नहीं है। सुन, मेरे को टीम बता दी स्पाइरल के लिए। लंबा नहीं, छोटा प्रोजेक्ट ढूंढो एंड खुद से बनाओ। देखता हूँ मैं। Hey, Gaming,
याशा ट्यून अभी तक सोचा नहीं क्या बनाना है। पर तुमको 3-4 हजार मीटू पड़ मेज क्या जाएगा। बनाया था CLG में? What do you क्या think, Shi? बात है। Is there a particular UID 36 एड क्रिन कैरेक्टर अस से कुकी क्या नहीं करेगा? है, अच्छा रुक करता ऐड। सेंसर के साथ आएगा। DCYT पे क्या सब आर्डुइनो किट? रास्पबेरी पी सब दिखा रहे। अल्मित गेमिंग UID। I see. Thank you. यूआईडी दे यार, नाहिदा देखते हैं। हाइपरब्लूम में एक दिक्कत है, कुकी नहीं है। Huh? Please, I told you. आर्डुइनो Just से call me बनाओ। Ganyu. मस्त मस्त Well, प्रोजेक्ट्स ही। all right. Just because. सस्ता कौन हाथ दोनों में। Still, Ganyu appears to be shaking Arduino, like a of cat course. whose whiskers have just been touched. वो तुमको में भी मिल जाएगा। Then I'll apply the. Oh, no need. पाई तुमको के पास जाएगा। Perhaps. Okay. Well, they seem to be सेंसर्स getting के along साथ swiftly. आएगा क्या सब किट? मैंने ही भेजा है ना। ओनली रास्पबेरी पाई के का पड़ता है। मैंने ही भेजा है, क्या भेजा? Auntie Cloud retained. अरे भाई वो मेरा यूआईडी है। Very आ good. रास्पबेरी पाई Your एक frig कंप्यूटर is ही nice छोटा and सा। sturdy. This design. मेरा यूआईडी भेजता आया हूँ अभी कहाँ? वालों कर रहा। अरे वेलो लाइका What color are you going to make it, Yao Yao? ना रैंक है If वेलो you में। are asking for one's own opinion, when giving a gift, the key consideration is the recipient's feelings. Oh, hey. जो With तुम age कंप्यूटर में comes करते हो love. वही उसमें कर I'm सकते gonna हो। start picking. Good. One will watch. You two seem strangely unoccupied. One was under the We actually haven't started yet. But we're मुझे going to start. रास्पबेरी पी का एक्सपीरियंस हाँ मोस्टली सारे सेंसर्स यूज किया हा। Let's go. First, we have to decide on the shape. Hey, what are you laughing at? Oh, if nothing else, maybe we're not. क्या क्या सेंसर यूज किया? Now, what एआई से उठा के कुछ डाल दिया। now that we've it's done. Now we just have to attach the string, right? All right. Gather around, everyone. Oh, Xianyun's calling us. Let one take a look. लेड LCD साउंड लाइट और भी था। Wow. Yep. एलईडी एलसीडी साउंड लाइट कौची बना रहा है? Did the pic? I वो stand बोर्ड or should I? सेंसर है वो। देख फ्लेक्स नहीं कर रहा। ईद है। एक G एक S एक अनरैंक्ड। No way. ओहो क्या बात है, गोल्ड प्लेयर भाई, The Swanee that the eyes and ears एकदम build infinity. प्लेयर। What about your kind, LCD traveler? लेड टू डिस्प्ले ही। लाइट हाँ मतलब भाई LDR। भैया जाट जाट हेलो ये अल्मित भाई। The Jade Chamber? Oh, लाइट मतलब एलडीआर। हेलो वाइब विद प्राइमी, वेलकम टू स्ट्रीम। क्या हाल चाल है भाई? who बहुत dares बहुत attempt such a स्वागत है। flagrant display? Oh, and to do so by पतंग making उड़ावल it जा रहा है, plain, जेड one चेम्बर simply का must बना है। know who it is that possesses गरमा such के लो, importance. गरमा के लो भाई। Continue attaching the strings, everyone. One will be साउंड किनसा US। Traveler, Paimon, could I trouble you to अबे allow माँ us ने to spend ऐसा the बनाया okay? था, इनपुट डालने पे लाइट जलेगी और साउंड आएगा। There's one up ahead. Looks like we can glide over. अरे यही तो है क्लाउड रिटर्न, खोजने किसको जा रहा है भाई? जेन्युइन गोन कहाँ? यही है भाई, सब पगला गया। का फेदर नहीं चेंज किया यार, इधर कैसे चेंज करते हैं? कौन सा लगा है इसको?
मैं बढ़िया अल्मित भाई बेट दिनों बाद में आया इधर। तो आप नहीं बताओ है क्या हाल? तो ठीक है ठाक है, सीनियर निकाल के बिल्ड कर दिए हैं, अभी तो इवेंट चल रहा है। ये वाला फेदर थोड़ा साउंड का शायद दू सेंसर था, एक साउंड डिटेक्ट करता था, दूसरे में आवाज आता था। Now is hardly an opportune time for your musings. Calm yourself. माउंटेन थोड़ा से AI को पर इग्नोर माउंटेन करोगे तो क्रैबर बहुत को प्रोजेक्ट्स ही। Retainer on the subject. Still thy One presume. Huh? माउंटेन कार्वर, माउंटेन सेपर और मून कार्वर को थोड़ा अच्छा सा देना चाहिए था Releasing the kite was no say मॉडल। further explanation. We can खपरी टाइप दे दिया भाई, Go retrieve. absolutely. लग रहा है टिकटॉकर। Oh. I truly possess no inkling of who could have released a kite into your esteemed domain. Verily, verily, we were but delighting in the surrounding scenery. This locale is home to such exquisite. ये प्राइम जाना पहचना And लग if रहा। that's all, आता था पहले, बीच में गायब था। Moon Carver? Mountain? you. Okay. It is of no consequence. Look, Then you are. how could one feel anger at the sight of two old friends enjoying themselves? We were. However, we offer. Your prowess. One has guests to attend to. Traveler, Paimon, do try to keep up. फिर भाग गए यार। अब किधर? अबे लेढ़ा टीपी मारो भाई। हाँ सुबह तुमको कहीं देखा है ऐसा लग रहा है। Before he left, Oh? he said he looked Now that you mention it, calming did a करण reflection. अर्जुन है भाई। Shenna? It यार याद made दिलाओ एक you दूसरा को। just like some people can eat spice. exactly. That's why tolerance is भाग अर्जुन भाग। Tolerance and understanding. We were just. One night fast approaches. Oh, it's been so. Worry not. One is Hey! Paimon's hungry too! Shenhe. Whoa, what's with all the secrecy? If you're ready to serve the. IoT में शिखा था सब 1-2 महीना ही गया। प्राइम भाई क्या मैं आपको जनता हूँ? हाँ शुभु तुमको भी कहीं नहीं देखा है, ऐसा LG रहा। हाँ ना कहीं तो देखा था इसको। नहीं शुभु नहीं जानते तुम मेरे को। पर्सन ब्लू स्पीकिंग माइक्रोफोन, पर्सन ब्लू स्पीकिंग माइक्रोफोन, पर्सन ब्लू स्पीकिंग माइक्रोफोन। ओहो कपड़ा बदल के लो रे, I can feel the wind. Is the headpiece कपड़ा secure? बदल के लो रे लड़का। तो चमक कर लो रे रे। ओ कमाल लग रही है भाई। given that one employed the services of the best tailor in all of Liyue. और है Colors टेलर। have Lately, I like black. one is gratified, The color black does. and you go. I favor. And the material. Yes. Thank you, Matt. One is content. वैसे प्राइम फ्री होगा तो मेरा कॉम्स कर देना लो। वीस प्राइम फ्री होगा तो मेरा कॉम्स कार देना। पर्सन ब्लू स्पीकिंग माइक्रोफोन। He appears to be a It appears that. kite string. के बाद आता में। One has only. Oh, उसके बाद हम निकल जाएंगे 10 के पहले। what? भाई बड़ा लंबा क्वेस्ट दिया।
Lantern right as one was contacting various he possessed us at a gathering of however, and later one means it is a time fate is That's... Do you have any idea? Is there anything up? combining our aha. कितना बड़ा Does क्वेस्ट that है make यार। sense? Now पूरा that पार्टी करिए क्या मानेगा आज? ओके शुभू। हो गया। कतई लंबा है ये। वैसे अलमित तुम्हारा मॉर्निंग स्ट्रीम लाइक कर देता वैसे हूँ अलमित और तुम्हारा थैंक यू। मॉर्निंग स्ट्रीम लाइक क्या देता हूँ। थैंक यू वेरी वेरी सिया थैंक यू। को बड़ा सुंदर बनाया। डिजाइन मस्त लगा। यार को बड़ा सुंदर बनाया, डिजाइन मस्त लगा। हाँ ठीक है, वही ना माउंटेन सेपर और माउंटेन ऑफिस खून जाना कारवा। होता तो अटेंड नहीं किया पता। कोई बात नहीं, अरे उतना बहुत है भाई। Thank you for add Astra. अबे प्राइम एक बुरा बात है। बोलो भाई क्या है बुरा। तू और बचा हुआ नोबलेट है। एंड काजू एक साथ आ रहा। फुल कर रहे हैं क्या वाइब भाई? प्राइम भाई ये भी इवेंट भी चल रहा है। हाँ पता है शुभू, तभी मैं नोबलेट लेगा। तोहल देख मेरे पास हाइजो बेनेट जायनलिंग एक्साइनक्यूए अलहैथम नाहिदा सारा रेडन है। देख मेरे पास हाइजू बेनेट जैंगलिंग जिंक्शुअल हाइथम नाहिदा सारा राइडन है। जेलान नहीं है, कजुआ नहीं है, कुकी कंफर्म नहीं है है। नूबलेट सो आगर एफआईआर काजू ट्राई करेंगा लूंगा। हम तो पर्सन ब्लू स्पीकिंग हम माइक्रोफोन जल्दी जाएंगे निकल लेना नहीं तो रेडोन। मैं तुम्हारे आईडी में काजू पुल मार दूंगा। हम निकालेंगे, जानता है क्या? कुछ नहीं है। कजुआ लेना है। नहीं है। हाँ शुभू तुम टॉप अप क्या देना। और बस यही था इवेंट। अरे छौरा काहिरी इवेंट जाके कर लेना गाइस। ओके तो यार कैसे करता है इसको? स्कैन ही करना पड़ेगा। अरे जरा हमारा इवेंट में बना देना। ये अलमित भाई जरा हैमर भी वेब इवेंट मार देना। हमारा कूदे नहीं होते हो भाई। क्या यहीं से तो थक भी सी नहीं होगा कुछ।
8 ही है मेरे पास। Peace prevails throughout the land, and all things are made new. As buds in the spring. मेरा पीटी कितना है? Era for 5 बस 5 2 7 है बस। वो भी वो कैरेक्टर निकालेंगे नोबलेट। वेपन पे कितना है मेरा? 10 पीटी है भाई। इस बार तो प्राइम निकाले। माइनक्राफ्ट आजा। बजे। तो सुबह एक चीज बताओ कि हम सो जाते हैं जल्दी लेकिन उठ जाते हैं इतना जल्दी क्या है? कभी हम 4 बजे उठ जा रहे हैं, कभी हम 5 बजे उठ जा रहे हैं। सो जा रहे हैं हम कभी 11 बजे, कभी 12 बजे, कभी 1 बजे। कुछ चले 5 बजे क्यों उठ जा रहे हैं? मेरा नींद नहीं पूरा हो रहा वैसे, गड़बड़ हो जा रहा। और उठ जाते हैं तो वापस नींदो नहीं आता। 5 बजे 4 बजे उठ जाते हैं। उठता क्यों है? अपने आप उठ लेटे जाता रहना। है यार। नींदे नहीं आता है, जैसे तैसे खाली हाँ पानी वानी पीने जाते हैं, पानी पी के उठते हैं बस। ठीक नींद आ जाएगा। करते हैं कल से, आज कर लेंगे पहले। और नींद भी हमको जल्दी आ जा रहा है उसी कारण। फिर नहीं हो रहा है नींद पूरा तो हमको अभी ये खाना बनाते हैं जस्ट नींद आ जाता है। जैसे तैसे खाना खाते हैं एकदम सर उलट आप जाता। डिस्पर्शन में है। सर आप डिस्पर्सन में हैं? क्या पता भाई। हमको घर वाला बोल रहा है सब हॉस्पिटल जाओ। के कारण से हॉस्पिटलों नहीं जा रहे हैं। चल घर तेरी बहुत के डिस्पर्सन। कोई लड़की काला जादू नहीं ना कर दी। लग तो वही ही रहा है भाई। वो ज्यादा कुछ नहीं, स्लीप साइकिल का मार लिया बास। अयनवा के तो तबीयत से खराब हो गया भाई। This one's got your name on it. तो इतना बड़ा पत्थर लगाता है कि अपनों पार नहीं हो पाता है। रात को बजे सोना एंड सुबह बजे उठना। रात को 12 बजे सोना और 6 बजे उठना। हम जब 12 बजे सोएगा सो मान रहे हैं। संत करके सोना। 4 मन शांत किया, ऑटोमेटिक सो जा रहे हैं।
अभी हमको धीरे धीरे चढ़ने लगा नींद। Guess all the survivors must have evacuated already. All that's left here are signs जैसे of तैसे खाना बनाएंगे, अभी 9:30 बजे ही जाएंगे आज हम। really be here? कल कैसे तो गए सब ठीक हो भाई। जाएगा। और ये ठीक नहीं ना हुआ, 10-11 के बाद से और दिक्कत हो जाएगा, That's Farina, क्योंकि right? फिर फोटोग्राफ Should I just give up? This is all meaningless. What was meant to happen did happen after all. Everyone's dead. I'm sorry. I'm so sorry. Give up, Farina. There's no point in holding out. I'm sorry, but what can I even do? Who's that? Don't worry, Farina. It's just us. So, it is you. Farina, you were crying. What do you mean, tear stains? Oh, I remember. The show at the Opera House earlier this morning was so moving. I'm still trying to process. Who did that uncivilized rabble think they were? Disturbing my enjoyment of the art. They even dare to tout their Archon. I must teach them a lesson. I can just imagine their twisted and frustrated faces once they realize that I'm nowhere to be found. Oh, and I'm sure Nouvellette and those people from the Maréchaussée Phantom are freaking out right next to them too. आज मैं 10 बजे बिस्तर में लेट जाऊंगा एंड भी हो तो होना ही है। Hey, there she is! The Hydro Archon's over there! Quick, after her! Farina, those people seem to be after you. They are? They're just some rabid fans who want to cut the line because they haven't been able to meet me in person, aren't they? That's against the rules. I can't let them get their way. Farina just ran off. Quick, we have to catch up with her. This should be the place, right? Hey, Farina! There's a good hiding spot over here. Quick, come to Paimon before the rest of them catch up to you. What? What is this place? Hurry, they're almost here. Fine, fine. I suppose haste is warranted. Lead the way. लॉल यही होता है। I'm so tired. I totally thought they had caught me. No, I mean, I merely gave in to the sheer enthusiasm they displayed. You're right. Yep, that's a good girl. What's happening? The ground's shaking. Is it an earthquake? Yeah, a quake of this kind preceded the flooding in Poisson, didn't it? It can't be. It's happening again. Well, there's no need to worry too much about that. Nouvellette's made some emergency plans, so the evacuation should Hello. go a lot smoother this time. Yeah, I hope you're right. But the people of Poisson, they've already...
It's true. I've been investigating the prophecy for hundreds of years. I once had informants all over Tevat, searching for clues and feeding information back to me. I've tried all kinds of ways, too, to hold back the sea. Anything to keep the coastline from advancing. But all my efforts proved to be futile in the end. Really, the truth has been clear to me for a very long time. We cannot make an enemy of the divine. No matter what we do, the will of the heavenly principles will have its way, and the prophecy shall be fulfilled. Give up. I do love the sound of that phrase. It would mean finally coming to terms with fate, but also for me to finally be free. Indeed, I've thought about giving up so many times, especially after we almost lost Poisson. Fate is really unreasonable, isn't it? It has no heart and obeys no rules. The prophecy has only just started to come true, and so many people have already lost their lives. But just now, it all became clear to me. I still don't have the right to come to terms with fate on behalf of everyone else. As long as the final moment hasn't come, it's still not too late. Don't worry. I will keep hope alive for everyone until the very end. Well, that's enough for now. I got the impulse to play the stricken maiden, but honestly, considering my rank and station, that wasn't a good fit at all. Don't take any of what I just said seriously. How could I possibly let Fontaine fall to the whims of trivial prophecy? Come on! Paimon could have sworn you were actually... Share my burden. That's impossible. It was fated right from the start that this would be my duty alone. A witness. Yes, I've heard that you came to Tevat from beyond the stars, yes. In other words, you never belonged here. And if Tevat is, in its entirety, a show on a stage, then you're just a spectator, aren't you? If that's the case... Ladies and gentlemen, this concludes my opening performance. Now, without further ado, we may proceed to the trial of our god. So this is what it is. Yes, you deserve praise for the effort you took to raise the dramatic stakes. Do not forget, however, that I am Focalor, the god of justice, the embodiment of justice itself. Does it not strike you as even the least bit absurd to bring the very concept of justice to trial? May I interpret these words as your refusal to stand trial? In that case, you will have the opportunity to defend your honor through a duel. You would draw your blade against a god? I see. It seems like you have made up your mind.
can't believe it. She just surrendered. What the heck is going on? Did I just see an Archon surrender to a human? Wow, how utterly humiliating. Lady Farina, what is the meaning of this? Shh. It would seem that there has been a misunderstanding. To be clear, the raising of both hands is not always an indication of surrender. Looking for excuses again. I raised my hands just now to indicate my acceptance of the trial. No duel shall be necessary. I will admit that I've been running away for a long time. I'm sorry, everyone. I was unable to protect the people of Poisson. It is my duty to stand trial for my crimes. You are not the only ones to be disappointed in me. I, too, am exceedingly disappointed in myself. But now, it is time for the Hydro Archon to show you her courage and resolve. I, Farina, will use this trial to show the world the true meaning of justice! This time, I will protect you. Applaud and rejoice! One of the most outrageous and fantastical arcs known to the opera epiclese is now unfolding before your eyes. Mark my words, this shall be one of the most exhilarating and brilliant shows ever to grace the stage of Fontaine! The trial of the Hydro Archon, Focalor, will now begin! Woohoo! Oh, no! Why does it feel like Farina just took over the whole thing? Like, come on! Didn't she just get forced to stand trial for her crime? Also, even though she's still acting super dramatic, she is taking this seriously this time, right? All right, then. Who will be my opponent in this trial? The court asks the prosecutor to please take the stand. Is that जनता माफ नहीं करेगी जनता माफ नहीं करेगी Then please speak, witness of Tivat, my accuser and fated opponent. Also, please allow me to ask, as a final question before the trial begins, just how much work did you do? Well, we did do a lot of prep after the meeting that day. I can go over the tasks assigned to the Spina di Rosula, since they were rather straightforward and easy. Navia, the president of the Spina di Rosula. Most of the people who participated in the disturbance this morning were my subordinates. They changed into plain clothes and came to the Opera House as regular audience members, waiting for the perfect opportunity to incite insurrection against you. The people's resentment against their Archon has been building as more and more of the prophecy is fulfilled. A spark was all we needed to turn smoldering anger into a flame. Moreover, according to our understanding and analysis of you, when something like that occurred, you would likely flee the scene and head to Poisson by yourself. So, we arranged for a second group to lie in wait there. So, you mean the ones who scoured the settlement for me were also from the Spina? And their goal was to force you to step into the giant magic box so you may personally participate in the greatest magic performance in all of Fontanian history. That's right. That house was a magic box, rather than someone's residence. As the super ultimate version of the setup that I used when I first performed at the Opera Epiclese, the volume of the box was increased by a whole order of magnitude, and the distance it traversed was the entire gap between Poisson and Aranias. Its cargo, of course, was an Archon instead of a human. My thanks, Farina. Without your help, we could never have pulled off such an extraordinary performance. Of course, this performance was only made possible with Father's support. The House of the Hearth spent a massive amount of labor in Mora to pull this off. We had to select a location, construct a giant magic box, dig a tunnel, and open up a path through the water. It was a lot of work for all of us. So, in other words,
The earthquake that we felt within the giant magic box was just a normal tremor from the transportation of... That's right. It wasn't a sign of another disaster to come. Then, I can guess Nervilette and Cloran's part. You gathered a crowd, prepared a stage, and made sure that the champion duelist would be immediately ready for a fight. Also that as soon as I appeared on the stage, the trial may commence without a hitch. Am I right? Yes, that is correct. Well, Clorand, I must commend you for your courage. Only the most outstanding champion duelist in all of Fontaine would accept a duel with an Archon without flinching. As for you, traveler, I suppose your role was to keep me distracted with conversation once you found me in Poisson. You'd make sure that I didn't notice anything amiss before revealing yourself as my prosecutor once we'd arrived onto the stage. Oh? Is that so? Then I suppose I must have missed my final chance. It's fine. It matters not. What's done is done. The stage is already set, so there's no reason to disappoint the audience. Let's see this trial through to the very end. Madam Prosecutor, please allow me to pass this along. This is a document that Miss Charlotte applied for and received permission to share with you during the trial. According to her, it should speed up the proceedings. Huh? Charlotte wanted to give us something? Oh, so she's here too! Hey, Charlotte! Oh, let Paimon see. Isn't this the exclusive interview that she did with us before? So she's already finished it, huh? Wait. Then that means this document is a perfect timeline of everything that's happened ever since we stepped foot in Fontaine! So in other words, we can refer to this anthology of evidence every time we want to use something from our journey as evidence for an argument! Let's quickly confirm the information in it. Just think of it as a refresher, alright? You defeated the Hydro Archon in the very first duel you took part in at the Opera House. That's one for the... This is the fortress of... According to Monsieur, I nearly... The words of someone as extraordinary as a witch. The prosecution and the defense are both in position. The trial shall now begin. Oh, come on, Nervilette. There's no need to repeat all the unimportant legalese. Just fast forward to the part where the prosecution lays out my offenses. As the defendant and the lead actress of this performance, I still haven't even been informed of my supposed guilt in all of this. Of course, it is only natural for humans to struggle to understand the actions of a god. However, you will need more than that to convict me of a crime. That's true, but my charge here is unrelated to your conduct as an Archon. Instead, I would like to charge you as a fraud, who's never been the Archon in the first place. Wait, what was that? Lady Farina's a fraud? Hey, I came here thinking that we were going to try the Charge accepted. Lady Farina, do you plead guilty to the charge? Lady Farina. I plead not guilty. How can I be guilty? There is no way that I, Focalor, otherwise known as Farina de Fontaine, a member of the Seven and the Regina of all waters, kindreds, peoples, and laws of Fontaine, could be anything other than your true Archon. Yeah. Even though Lady Farina can be rather eccentric, isn't it going too far to doubt her very identity? Yeah, I've never questioned her identity either. Sure, Lady Farina can be super irresponsible, but what grounds does that prosecutor have to make such a huge claim? I have cause to believe that common sense will prevail in this case. Many of the members of the audience have known me as the Hydro Archon ever since they were born.
there would be no fooling their memory. See? Even the Oratrice has decided to show me its favor. Are you sure you want to commit to a charge that will never be upheld? If you wish to drop the case, I can promise you as the god of justice that you will not have to face trial for making a false accusation. We will treat everything that's happened as a dramatic spectacle and move on with our lives. What do you say to that? An argument with near impossible odds, huh? We have to not only refute Furina's claims, but also overturn the long-held beliefs of the people. Well, I tried to give you the chance to surrender. If you must persist, then let me ask. If you believe I'm not the Archon, then what manner of being do you think I am? And if I was not the Archon, then how did I manage to live for over 500 years? First of all, you may be a member of another long-lived race, which would allow you to naturally possess an extended lifespan. And second of all, even if that wasn't the case, there could be other ways to extend your life. Who gave you that idea? Was it the knave? You'd sink so low as to use a harbinger's words against me. A curse? I once thought it possible that the aura of an Archon might naturally resemble a type of curse. But in light of this claim, perhaps what I sensed was not your divinity, but a curse after all. Neverlet sensed it too, huh? Lady Furina is actually a human? Well, it is true that it's extremely difficult to tell humans and gods apart just by looking at them. Well, don't start celebrating too early now. Even if I have been carrying a curse like you said, how does that prove that I am merely a human being? Besides, everyone knows that the main difference between a human and a god is the possession of authority. Gods can do what humans cannot. That's why they're worshipped as gods. For centuries, manifestations of my authority have served the nation of Fontaine. One need only to turn their eyes towards the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinal in this very opera house, or consider the indemnitium that is used in every aspect of life. You tried to reference the Oratrice, but weren't you as confused as all the rest of us when the Oratrice declared Child to be guilty without any proof? Otherwise, you should have come up with a good explanation for that by now. Didn't I make myself clear at the time? The decisions of the gods are naturally difficult for humans to comprehend. There is no need to provide an explanation. Lady Furina, I believe a reminder of your current circumstances is in order. While the court is in session, the principles of justice and the law must come before all else. While you are an Archon, you are also first and foremost the defendant in this trial. You will prove yourself unable to defend against the prosecution's charges if you continue to withhold vital information against the rules of the court. I never thought you'd use that kind of rhetoric against me. That was no trick of rhetoric, Lady Furina. I've merely reiterated the rules of the court. Rules that all should respect and follow. So, you neither knew why Child was declared guilty, nor did you understand the structure and operations of the Oratrice. Instead of having been created by you, the manifestations of authority you mentioned have been made by the real Hydro Archon, haven't they? The real Hydro Archon. Well, now you're really losing me.
It is true that I did not know why the Oratrice gave out a guilty verdict that day, but the Oratrice handed out that verdict unilaterally, and it has been operating independently ever since it was first created. You can't argue that just because a divine creation is flawed, that the god behind it must also be no god at all. She's still throwing out all kinds of excuses. Seems like she's confident that we won't be able to produce proof that she has no power over the Oratrice. My power as an Archon. There are many ordinary citizens in the audience. How can I just carelessly demonstrate the formidable power of an Archon? If that poses a concern, I'm prepared to extend my protection to the audience. You don't need to go that far. Aren't you the Hydro Archon? Or is it that you can't even wield the power of Hydro, much less the authority of a god? Indemnitium! Yes! It's all because of Indemnitium! All Archons derive their power from the faith of the people, and I've converted the people's faith in justice into Indemnitium! Thus did I give up all of my divine power to provide everyone with energy for their daily lives. Have you ever seen a more magnanimous god? Isn't that? Yeah, no matter how generous an Archon can be, how could they give up all their power? Can a god with no power even still be called a god? It seems like nobody's buying Furina's excuse. Hey, come now, everyone. Please don't stare at me as if I was I'm still the same Furina you knew, right? The one that you loved. Please. You've got to believe me. If what the prosecutor said is true, she really has committed a grave offense. Did she deceive all of us? And all of our parents and Enough! That's enough. Tell me then, if I'm not the real Hydro Archon, then who is? If you have no evidence of another Hydro Archon's existence, nor can you find anyone who can back up their claim to be such, then what grounds have you to say that I'm not actually the real deal? Wow, she came up with yet another argument. How can we refute her now? Seems like she really doesn't want to get... That doesn't sound right. That doesn't... It has been established that all Fontanians can dissolve in water from the primordial sea. And that means... Since you insist on claiming to be a god and not a human, then there's a method that you can use right here and now to eliminate all suspicions of you being the latter. Miss Navia, please apply to serve as a temporary attorney for the prosecution before addressing the court. Though you act in partnership with the prosecutor, you must still adhere to proper procedure. Super sorry, Monsieur Chief Justice. I swear this really will be the last time that I'll speak out of turn now. I've brought some seawater from Poisson. As everyone knows, a massive flood struck the area not long ago, including those of some of my closest friends. So, Miss Furina, would you dare to touch some of this seawater? If we are to believe that you are indeed the real Hydro Archon, touching this seawater would have no effect on you. All it should do is strengthen your case. But if you don't dare to touch it, then we would have basically proved the reverse. Oh, and I must remind you that after the disaster at Poisson, nobody wants to see any more people dissolve. I do hope you'll act prudently and choose the simpler path of admitting guilt. Navia from the Spina di Rasula. If Lady Furina is indeed just a human, she's probably...
Lady Farina, this test has been unilaterally proposed by the prosecution. As it falls outside the realm of standard court proceedings, you possess the right to decline participation. Well, of course he had to tell her that. But she's just staring at the wall. What's going on? Is she really planning to... that's not... Due to the inherent risk of the test, Lady Farina. Hey! I'm fine! Look at me, everyone! Will you believe me now? I really am your Archon! I'm nothing like a normal human who would fall apart as soon as they touch this water! Miss Siegewin? If you're present, Miss Siegewin, please come forward and attend to the defendant. Siege? Don't be nervous. It'll just take a few seconds. That should... Please announce the results of your evaluation to the court, Miss Siegewin. As everyone doubtlessly saw, Miss Farina was displaying symptoms of hyperventilation and flushed skin. These indicate that she was experiencing the adverse effects of exposure to primordial seawater. The extent to which she was affected is the same as other humans when exposed to primordial seawater of a similar concentration. Thank you, Miss Siegewin. Lady Farina, you may return to the defendant's stand. Oh, wait. What did she just say? I didn't get dissolved. Shouldn't that be enough to prove my innocence? Well, considering your tendency to run from your problems, we did originally prepare a direct sample of the seawater around Poisson. However, after extensive discussion, we exchanged it for a sample that is not concentrated enough to dissolve an actual human. After all, on the off chance that something entirely unexpected might occur, we don't want anyone else to lose their life to the sea. Yeah, so out of regard for Farina's life, you secured a low-concentration sample and asked the head nurse to serve as an expert witness. It's a great thing that the direct sample wasn't actual... I can't believe... Listen to me, everyone! Think about it! How can you conclusively prove that an Archon can't also be affected by the primordial seawater? Also, if I was really just a human, why would I dare to just put my hand... Please, everyone, anyone, just listen to me! I swear, I really am your Archon! I don't think anything she... With all the things that have been said, Paimon doesn't think that... I believe the time for arguments and presentation of evidence has come to an end. If there are no objections, we will move on to the final judgment. I don't think anything she says at this point will sway her. She's too stacked against her now. In my capacity as Chief Justice, I shall now render judgment on Farina's misrepresentation of herself as the Archon of Fontaine. As a human who knowingly deceived her fellow citizens, Farina is... guilty. We shall now turn to the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinale to render the final verdict on the charge. According to the judgment of the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinale, Farina is... Well, what's wrong? What's the Oratrice's verdict? No,
The Oratrice also displays a guilty verdict. Isn't that correct then? However, the exact wording of the verdict is thus. The Hydro Archon, guilty, to be punished via the death sentence. That's actually one of the available sentences. The one and only time the death sentence has been handed out at the court. And it's been given to the very person we've worshipped as the god of justice? Furina's been sentenced to death by the Oratrice? We just wanted to use the trial to show her the seriousness of things so she'd tell us the truth. How did things escalate this quickly? This outcome is indeed quite strange. According to Fontaine's current definitions of justice, as well as its recommendations for criminal sentences, is this sentence really appropriate for the crimes that have been committed? Yeah! Even Fauché wasn't sentenced to death by the Oratrice. You know, the real evil mastermind behind the serial disappearances case. Indeed. Not only is Furina's sentence overly excessive, the very point of our trial today was also to prove that Furina has never been the Hydro Archon in the first place. But now, the Oratrice seems to have deliberately invoked the title of the Hydro Archon. What does this mean? Excuse me, if I may interrupt. Is the trial still Primee! You finally made it. I assume this means you've completed your mission? Mm-hmm. Any mission Father assigns to me will always be top priority. Is that the first prophecy slate? Huh. So the knave privately arranged for Fremine to try and find the missing slate? I looked everywhere and finally found it at the bottom of the sea. It took me a long time to get around some dangerous stretches of water. But has the trial already concluded? Then doesn't that... Thank you for your hard work, Mr. Fremine. Please allow me to review the record left on the slate. Traveler, I believe that you have already seen the other existing slates, and would like you to come here and confirm their content. Huh? So what do you see? What is it? I believe I've now made sense of the Hydro Archon's crime. It has to do with Fontaine's lost history. Huh? Isn't the Hydro Archon just guilty of deceiving her people? Oh, wait, no, that's Furina, and we've already proven that she's not the Hydro Archon. So when you say Hydro Archon, do you mean the real Hydro Archon we've been kinda talking about? In truth, everything that you've encountered in Fontaine up until this point can be traced back to the contents of these stone slates. However, I'm uncertain as to how much sense they currently make to you. Okay, let's try to recall the contents of the other three... The first stone slate describes what you just said. It seems to show the previous Hydro Archon using her divine power, and then the Oceanids turn into humans. Does that mean that Fontainians are transformed Oceanids? Oh, Paimon wasn't expecting that. But if Oceanids can turn into humans, then perhaps this process can be reversed as well. The second stone slate shows Celestia floating in the sky, and the Hydro Archon and her people worshipping it together. But the heavens still brought judgment down upon them. This must be the point when the Hydro Archon and the Fontainians were branded with their original sin. Does this mean that the original sin and the Hydro Archon sin are the same thing? The third slate shows the Hydro Archon sinking into the sea surrounded by many people. That reminds Paimon, didn't we also watch that happen to someone else? Well, the fourth slate is the prophecy the Fontainians have been talking about. People dissolving into the sea, the Hydro Archon crying on her throne, and so on. We didn't believe that such a crazy disaster could happen at first, did we?
We know from the case of the serial disappearance, and the first stone slate tells us that long ago the Hydro Archon used her power to turn Oceanids into humans. This might be the reason. Perhaps what is about to take place has all happened before. The true sin of the Hydro Archon that Nervilette mentioned, and the original sin cast down on the people of Fontaine by Celestia, as recorded on the stone slates. It's not as simple as falling into the sea. When Navia fell into the sea, her consciousness was subjected to judgment. The stone slates show the people gathered around the Hydro Archon in the sea. Could that be alluding to the same? Prophecy from the stone slates found its way into society, but not many people believed it at first. The fortress of Meropide was nearly flooded with if we hadn't... They'll dissolve into the primordial sea but won't cease to exist. Their essence will flow in the seawater, converge, and take the form of an Oceanid. The Hydro Archon was sentenced to death in court, shocking everyone present. Perhaps this means that her sin was actually Fontaine's original sin. Navia fell into the water inside those ruins, and she nearly dissolved. She was surrounded by the people of Poisson in a court within her consciousness. The eruption of the primordial sea at the fortress of Meropide was the surest sign that the prophecy was about to come to pass no matter what. The stone slate's contents can all be verified by recent events. If we combine what we know together, loads of truths should come to light. Now, but then it feels like... Let's hear them. Incredible. We're not real. All Fontainians were originally created by the late previous Hydro Archon, with Oceanids as their basis. The evidence for that can be found in how only Fontainians could dissolve in primordial seawater, and how all the girls Vacher dissolved were also turned into Oceanids. Oh, and according to Navia, when she was about to get dissolved, she also saw everyone gathered around for a trial. All of them in the shape of Oceanids. Indeed. Yeah, and it follows from the content of the first slate that she probably angered Celestia by creating humans without prior permission. That could also explain why the Oratrice judged the Hydro Archon to be guilty. It's to account for that ancient sin. The Hydro Archon's true sin was creating us? And yet, after many hundreds of years, the Hydro Archon's creations have turned around to try to judge the Archon within the Opera Epiclese.
The twists of history are often the most unexpected of all. Yeah! Isn't the image here just like when Navia fell into the sea? So wouldn't it be trying to show the image of the Hydro Archon also falling into the sea once the prophecy has been fulfilled in the fourth slate? In the end, the people will all be dissolved into the waters, and only the Hydro Archon will remain weeping on her throne. Only then will the sins of the people of Fontaine be washed away. Did Paimon get all that right? You've made some keen deductions. I must say, given how much you still don't know, it is impressive that you've already managed to connect so many people. However, while you were able to decode all the information on the slates, they've also been etched with an additional layer of hidden information using a different power source. When we were at the ruins, I tried to decipher the hidden information recorded in the slates. But since we only had 3 slates at the time, I was unable to come to a full conclusion. Now that the slate collection is complete, I shall make another attempt to decipher the narrative recorded within. If everything goes well, we should finally be informed of the unadulterated truth. Well? I believe I should share this truth not only with you, but with all the people of Fontaine as well. I will try to briefly summarize it for you. Your hypotheses regarding the origin of Fontainians and the sin of the Hydro Archon were both correct. In the Fontaine of old, the previous Hydro Archon sensed the yearning of her Oceanid familiars for life on land. The Oceanids were enamored with the beauty and romanticism of human beings, and wishing to have those experiences for themselves, expressed to the Hydro Archon their desire to become of a similar kind. However, even though water as an element is intricately linked with the power of life, the Hydro Archon, as one of the 7, did not possess the authority to create a new form of human life. Not one to give in, she eventually found a way to create permanent humanoid bodies for her familiars by appropriating the power of this planet's primordial sea. She poured primordial seawater into the Oceanids' blood vessels, creating humanoid mimics in the process. But if Fontainians were to ever come into direct contact with water from the primordial sea, the power within their bodies would escape these artificial restraints and return to the sea. As a result, their forms would collapse, and they would be reverted to their original forms as Oceanids. Of course, the Hydro Archon never received permission from the heavenly principles to create a new human race. And thus, the Hydro Archon and all of her creations came to shoulder the original sin of appropriating the power of the primordial sea. That is the true history of how the people of Fontaine first came into being. So we were all Oceanids before we turned into human beings? That's way too much information for me. Wait, but if that's the truth, we can't let the Hydro Archon be sentenced to death? This really might be too much information for your regular Fontainian, but it does answer a lot of our questions. Alas, your hypothesis regarding the 3rd and 4th stone slates was inaccurate. The slates' respective positions are, in fact, correct. A key point of the visual on the 3rd slate is how all the individuals depicted in the water are humans rather than Oceanids. They have not been dissolved, which implies that the water depicted in this slate is not water from the primordial sea. The nation of Fontaine is the nation of Hydro, as well as the nation of trials and justice. Instead of being the literal element, the water in the scene symbolizes judgment and justice. You may also recall Navia's experience. When she fell into the sea, her consciousness was surrounded by that of many others who intended to hold a trial to determine her fate. Therefore, the meaning of the 3rd slate is that the people of Fontaine shall try the Hydro Archon at the court of justice. Yes, it refers to our present situation. I think I'm following now. So, what you're saying is, even though we decided to put on this trial to avoid fulfilling the prophecy, in truth, everything we've done has happened exactly as the prophecy foretold. So now, it seems, we're the ones making sure it comes true. What should we do? Huh. No matter what, the prophecy will be fulfilled. If that's the case,
Does that mean the scene in the fourth slate will also be fulfilled soon? Traveler, I would like to point out another small fallacy in your deductions about the fourth slate. You probably thought that the eruption of primordial seawater beneath the fortress of Meripede served as the surest sign that the prophecy was about to come to pass, yes? However, I believe that rather than being a sure sign, that eruption could in fact only be a small warning of something far worse to come. As for the root cause of the catastrophe, I believe you've already encountered it once before. This eruption was just a small warning of the things to come. We must find the root cause of the disaster. It was both dream and reality. If we're talking about a true culprit, that could only be that thing inside the primordial sea, right? The truth, the original sin, the trial, and the root cause of the disaster. That was way too close! How did that thing just burst into the opera house? Wait, was that the huge whale you saw in your dream? So we've met it at last. I understand very well why it has chosen to make an appearance here. That whale does not belong to Tevat. It is a monster that has traversed the stars, weeping all the while. It has been greedily consuming the energy from the planet's primordial sea, using it to grow. That is the main cause for the rising sea levels. And once it has finished consuming all of the energy contained within the sea, its next step will be... You said that when the Hydro Archon first created Fontanians out of Oceanids, she filled their blood vessels with primordial seawater. Precisely. That whale finds the blood of Fontanians nigh impossible to resist. Therefore, when it left the primordial sea, it decided to make its next stop a packed opera house full of food. Food. We just barely managed to push it back, right? In that case, won't it come back to target the people again once it's managed to recover its strength? That is correct. Indeed, it is more accurate to say that we should thank that Harbinger for buying us some time. Without him, the whale would have likely come onto land far sooner. From the way he looked, he must have been fighting the creature for quite a long time. That battle maniac. We've always known that he had a special connection with that whale, but we definitely didn't expect it to help us out like this. Anyway,
Now that we know that this whale is the actual cause of the disaster recorded in the It is too late. It had already absorbed too much of the primordial sea's energy before we could notice it. At this point, it has become practically integrated with the sea itself. Even if the entirety of Teyvat were to be destroyed, it could still survive and swim off towards some other world. That's not something I will accept. We've already done everything we can, and we even found the true culprit. We've come so far. You can't just tell me that the last hurdle is some impossible foe. That's just not fair. Indeed, that's not how a grand performance should end. I'll fight it to the end, no matter what. So the prophecy will be fulfilled no matter what, huh? The prophecy. Yes, what has been prophesied will be fulfilled. You may view such things as the history of the future. Just as Ultimately, fate shall serve as your only guide, no matter what will happen in Teyvat's future. What's happening with the Oratrice? I believe it is preparing to carry out the death sentence. Farina! No, I still need answers. You... Sorry. That shocked expression on your face is just too amusing. I couldn't help myself. You are not Farina. Who are you? Ah, the sweet sound of bewilderment. Marvelous. A sure sign that my attempt to deceive everyone was a resounding success. But to answer your question, I am Focalor. You know, the god. Focalor? Why did you deceive us? Oh, that wasn't my goal, of course. Goodness, no. But I had to fool everyone else too, if I was to stand any chance of deceiving the heavenly principles. Deceiving the heavenly principles? It's all because of that pernicious prophecy. Dreadful, wasn't it? Everyone doomed to dissolve. Fontaine condemned to be flooded. One was not amused. In fact, one was positively bemused when that problem was thrust upon me by my dearest predecessor. That's the former Hydro Archon Egeria, for the uninitiated.
It hardly gets more disastrous than a preordained national catastrophe, now does it? She knew full well that the prophecy would surely come to pass. And as one of the seven, she also knew full well that one defies the heavenly principles at one's peril. So yes, as you have no doubt surmised, it was a rather impossible situation that I found myself in. I spent a terribly long time mulling it over, alone on the ocean floor. And I was almost growing barnacles by the time I finally realized there was only one possible solution to this confounding conundrum. I had to outwit the heavenly principles, allow the prophecy to be fulfilled, ostensibly at least, while saving everyone at the same time. I'm a genius, I know. I can only assume that's why Egeria chose me as her successor. Although, looking back now, it was hardly the inheritance one dreams of. Between the task of saving the nation, the quotidian duties of the Hydro Archon, and not to mention the original sin of creating a new race of humans, I dare say she left me quite a colossal mess to clean up. But one can only play the hand one is dealt. I did not choose this, any more than I chose to be one of her Oceanid familiars. So you were also once one of the Oceanids, transformed into a human by Egeria's hand? Yes, I was. I always dreamed of becoming human. And I still do, even now. In my eyes, to be human is to be part of the greatest opera ever known. After becoming a god, I separated my divinity from my body and spirit, leaving behind only a self that was as naive and bewildered as my past self on her first day as a human being. The me you see before you now is that divinity. And the human counterpart I left behind, I named Farina. She could feel joy, sorrow, and everything in between. She could be as vain and conceited, or as meek and vulnerable as she wished. Her strengths were of a kind only a human could possess, as were her shortcomings. But in my eyes, Farina's humanity was what made her perfect. She was perfectly human in every way. The person I always wanted to be. Anyway, so then I cursed her. All part of the plan, of course. The plan to deceive the heavenly principles. Do you still remember the final scene of the prophecy? The Hydra Archon alone, weeping on her throne. In order that the prophecy might appear fulfilled, I invited Farina to be an actress, to play the part of the Hydro Archon in the prophecy. Under the curse I placed on her, so long as I, Focalor's divinity, continued to exist, she could not die. But nor was she free to live her life in the pursuit of happiness. Instead, she was forced to take the stage in the opera house, to embrace the role of leading lady, to forever play the part of the god from the prophecy, all to create a deceitful appearance of that prophecy coming to pass. I suppose now you probably understand why your court is called the Opera Epiclese. But Farina is only human, isn't she? Even though she has had a long life, her mind is no stronger than that of any other ordinary human being. I cannot begin to fathom what she has had to endure. It must have been torture for her. It has indeed. And although she is, in a sense, me in human form, I most definitely owe her an apology for it. It's been 500 years, and all along, she's been playing her part in the most unimaginably long,
unbearably lonely, and agonizingly painful opera of all time.
invited you to come onto the stage. Now, I understand your admiration for my august self, but I must ask you to keep to the— All right. It is not my intent to reprimand you. There is no need to state your name. Just be off with you. Do not distract me from my performance. Oh, do not jest. Can you not feel it? I am Focalor. The eyes of countless Fontanians are upon me. I must, at all times, display the utmost elegance and nobility.